Good evening, sir. भाई कोई तो बोलो, सब लोग शांत हो। हेलो। हाँ भाई। बोलो भाई, कहाँ क्या से हो चल रहा भाई? है? हाँ, अब सब बढ़िया चल रहा है। हमको भी थोड़ा सिखा दो भाई। एनी डेस्क पे आओ, अभी सिखाते हैं। क्या? एनी डेस्क पे आओ। हाँ ठीक है। अमित भाई बोल रहे हैं ना? मैं विपिन नहीं राठौर भाई। बोल रहा हूँ। कौन? विपिन राठौर। विपिन, ओके। आप ही जो शेयर स्क्रीन करके बता रहे थे ना कल? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी तक शेयर स्क्रीन नहीं किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। हेलो। मेरे को भी बहुत अभी पेंडिंग बहुत काम है इसका। हेलो हाँ भाई, बोलिए। भैया, आपने पिछली 2 क्लास लगा ली है क्या? हाँ, हमने तो हाँ सारा कंप्लीट कर लिया, बस अभी जेएस में उसके थोड़ा नोट्स सा वगैरह weak भी है। है भाई आपके पास? अरे जब यार इंटरनेट है तो बुक की क्या जरूरत। अरे हाँ, पता वो क्या तो भाई, है। यार थोड़ी प्रॉब्लम सी होगी थी ना, इस वजह से पिछली 2 क्लास नहीं लगा पाया मैं। कुछ तो लिख के रखना भाई, मेन पॉइंट्स। भाई मैं तो डायरी अच्छा बना तो के भाई यार, फोटो क्लिक करके भेजना व्हाट्सएप पे। हाँ, हमको भी भेजना ना भाई। हम एक प्राइवेट ग्रुप बनाएंगे भाई, उधर हम सब हाँ डिस्कस कर बढ़िया। सकते हैं। अरे ग्रुप तो है भाई, ग्रुप तो है। है भाई विपिन कुमार वो ग्रुप तो। ऑफिशियल है ना? अभी एक काम करो ना, सब लोग मेरे को नंबर सेंड कर दो तो मैं सबको ऐड कर दूंगा। ठीक ये है। ले है भाई, तो नंबर दे देते हैं है आपको। तो प्राइवेट ग्रुप। वैसे लगभग इस क्लास में कितने लोग हैं? लगभग 40 होंगे। हाँ भाई। हाँ, 35 30 प्लस है। 30। विपिन भाई है तो प्राइवेट ग्रुप में एडमिन हो तो तुम। हाँ जी हूँ तो, लेकिन काफी नंबर नहीं ना मेरे पास। अरे लिंक शेयर कर ये दो ले भाई, भाई। चैट पे लिंक शेयर कर दो, वो ज्वाइन हो जाएंगे अभी अपने। अभी करता हूँ लिंक शेयर। उसको ज्वाइन कर लेना, अभी करता हूँ। हे कुणाल भाई। ओके भाई, ओके भाई। हेलो। कल कौन हाँ से जिसके पास। स्क्रीन कौन शेयर कर रहे थे कल? मैं पता नहीं किया भाई, था कल की क्लास नहीं लगा पाए। मैं मत बोलो भाई, नाम बोलो, नाम। प्रकाश। प्रकाश किया था सर। कौन? प्रकाश। हाँ भाई। हमको थोड़ा सिखा दो भाई, कितना आगे बढ़ रहे हो। कहा। सोसाइटी थोड़ा बना आप डाला तो एक ही दिन में। सही नहीं। चैट बॉक्स में ग्रुप अच्छा आ अभी तक गया। एक ही दिन में नहीं, 2 दिन में बनी। चैट बॉक्स में गुड ग्रुप आ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Okay, so let's start with today's topic. So today we will going to cover JavaScript functions, which is basically a most important topic of the JavaScript. Even if you write any code in React.js video projects, then JavaScript play a very important role to make your any project. Okay, so now we are going to cover JavaScript functions. So let's start. आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या आज? हाँ सर, वॉइस स्लो आ रहा है। हाँ, थोड़ा ठीक नहीं हुआ। Yes, it's okay. Yeah. So my screen is visible. Yes, sir. यस सर, यस सर। यस यस सर। सर। Okay. So basically, we have covered
Yeah. Our notepad is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. basically, we have covered some data types in JavaScript, like number, which is done. Uh, Similarly, we have discussed about string. We have discussed about Boolean values. We have also discussed about undefined, right? Apart from that, we have discussed about comparison operators, which is basically helps in compare the two different values. So we have done with comparison operators. Then we have talked about JavaScript variable, which is var keyword. So basically, if we assign any value, then we have to assign this value to some variable. So we have discussed about it. Apart from that, we have discussed about some conditional handlers, like if condition, we have done else, we have done else if, right? Okay. Apart from that, we have also covered some logical operators like and, or, and not. So we are done with these operators. And when we build our project, then these things are just used on your daily practice. Like तुम्हें डेली बेसिस पे ये सारी चीजें प्रैक्टिस होगी और डेली बेसिस पे तुम कुछ ना कुछ ऑपरेट कर रहे हो. So let's start with today's our most important topic is JavaScript functions. So what is the benefit of using JavaScript functions? What is function? What are the types of function? How can I define our function? How can we execute our functions? So we will talk about these things today, right? So now we are going to cover our JavaScript functions. Okay, so basically I'm going to open my console browser. Before, yes, so let's with something we are going to write here is that if we want something like that, if we want addition, like we want to add two numbers, we want to add two numbers, then we have to define our variable, and then we will give 2 plus 3, which returns undefined. When we call a, then it returns 5. So अब क्या हो रहा है कि if you want something some different addition, if you want something like this, like var b is equals to 5 plus 5, so it returns what? 10. Is it clear now? So basically JavaScript function is like something which is what you can see here. I'm just going to zoom out. Yeah. So JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. बस इतना समझना है अभी कि what is JavaScript functions. So JavaScript function is a block of code designed to perform particular task. Something like this. If we want to add two numbers, so this so adding of two numbers is what? A task. Is it clear now? Adding of two numbers is a what? A task which is repetitively done. Like यहाँ पे आपने 2 plus 3 किया, यहाँ simple आपने 5 plus 5 किया. Again, if you want something like this, variable c is equals to 10 plus 10, right? So it returns 20. So our task is similar in both of the three cases. Task हमारा क्या है? Similar है. तीनों में हम क्या कर रहे हैं? We are going to add two numbers. So our task is what? We have to add two numbers. So task is same, only values are different. Task is same, only values is different. So in this case, we can make a function which add two numbers. We give two numbers as an input and it performs some task and returns some value. I mean to say that, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझना. I'm going to okay. Screen is visible now? थोड़ा सा zoom Yes, out yes, करिएगा. sir. Yeah, now it is visible. Okay. Yeah.
So I'm going to write something like this. I want to make something which can add two numbers. मैं क्या चाहता हूं कि दो नंबर्स के लिए कुछ ऐसा करूं कि जब भी दो नंबर्स इनपुट आए और मैं उसको कॉल करूं तो वो क्या करे, वो दोनों नंबर को ऐड कर दे. मींस वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू मेक अ फंक्शन दैट ऐड टू नंबर्स. सो task is same. So if we write some function which just gives the result of adding two numbers, then what, task is same, only your values are different. जब भी आप वो values दोगे तो वो उस values के corresponding अपने task को perform करेगा. तो क्या task में कुछ differentiate होगा? If I want to make a function which add two numbers, then only value is different ना, task is same. Is it clear? क्लियर सर. थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है ना? अभी आगे बहुत सारी बातें करेंगे फंक्शन से रिलेटेड. बस इतना समझना है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन. तो बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन इज दैट इफ यू वांट टू परफॉर्म सम टास्क, like a JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. If you want to perform a particular task repetitively, like तुम repeated वे में तुम्हें दो नंबर्स का एडिशन हर जगह चाहिए, कहीं भी तुम्हें चाहिए दो नंबर का एडिशन, तो वी हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट जस्ट गिव दीज टू इनपुट्स एंड add the two inputs and save the result in the variable and just return this variable. This is the first way. But when you want कि ये टास्क तो रिपीटिवली डन हो रहा है, बार बार हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग टू इनपुट्स एंड इट एड्स द two inputs and give some result which is stored in variable b, and then we just return this output. तो यहाँ क्या हो रहा है कि every time it takes two numbers and add them. Then what is this कि your task is same, which is what, addition of two numbers, but आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार इनपुट को ऐड करना पड़ रहा है. तो हम एक ऐसा कुछ बना ले जिसमें हम ये दो इनपुट दे और वो हमें कुछ ऐड करके वैल्यू रिटर्न कर दे. तो अभी क्लियर होगा. बस इतना समझो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन, जो आगे हम अभी देखेंगे क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट I am going to start with some HTML, CSS and JavaScript code. So how to connect our JavaScript file with normal HTML and CSS file. How can we connect our JavaScript file with normal HTML and CSS file? So let's start. I'm going to make one file here, folder here, sorry. This folder's name is what? HTML.js. Normal, this folder is HTML.js. I'm going to go inside this folder and hit the enter button. Hit the click the mouse and just type cmd. This returns us the PowerShell. Just write code code dot and hit the enter. Then your VS Code is started now. So we have some HTML JSS folder. I am going to make some HTML file first, which is index.js. This is your index.js, and I am going to write the doc. Sorry. Okay. Document. Okay. So normally I'm going to make some snippet, which is HTML. Inside HTML, we have head tag. In head, we have some title tag. Right. आप HTML के टैग्स लिख रहे हैं बट फाइल आपने .js से सेव की है. Okay, sorry. Thanks for इसलिए वो doc नहीं ले रहा था. Okay. Yeah. So now it takes our doc snippet, and this is our boilerplate code for the HTML. Right. Now I'm going to make one script file here, which is what? Script.js. Is it clear? I'm just making one HTML file and one JS file. Okay. Now I'm going to give some script tag which links this script file to index.html.
So there are two ways to connect R. There are two ways to connect what HTML file with what with JavaScript. तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं कि नॉर्मल थिंग है कि HTML को JavaScript से कैसे कनेक्ट करना है. So we are going to attach a script file with index.html. Similarly, just like this, when we make any CSS file, I'm going to make one style.css file here, right? And I'm going to connect this style file. So this is what link relation, which is our style sheet, and what? So href, and href is what? Dot style dot css, right? So our CSS file has been connected with what? HTML file. Now we have to connect the script file with index.html file. Then we have two ways. There are two ways to connect HTML file with JavaScript. First is that I'm going to copy, and this is okay. First way is that write script tag in body, and second is what? Write script tag in head of the HTML file. Head of the HTML file. So यहाँ what is the difference between these two? कि जब आप किसी भी स्क्रिप्ट फाइल को बॉडी से आप कनेक्ट करते हो और हेड से कनेक्ट करते हो, तो देयर आर very major difference between when you connect your script tag with body and when you connect script tag with head of the HTML file. So let's start with what I'm going to make one script file. Firstly, I'm just going to connect with script.js with index.html. So let's start. I have to write some script. This is our script tag, right? In script tag, we have to define our type. This is an attribute for script, and this tag, this type contains what? Text /JavaScript. Text/JavaScript. And second, what? src, which is what? script.js. Yes. So you have to give something like this. So type, which is a Java, which indicates that our script is a JavaScript file, and source where the file exists. So now your JavaScript file is connected with what? Index.html file. Just save this, and now I'm going to render some h1 here. Is what? Hello from what? JavaScript relations. Now I control S. Now I'm going to our folder, which is html.js. We have three files. One is HTML, one is JavaScript file, and one is CSS file. Now I'm going to render this HTML file. So hello from JavaScript relations, it renders. Okay. So there is something I write in script.js, something like this. If I'm going to write alert and hello, our JS file is connected with HTML file, and just control S. Then our JavaScript is linked with what? HTML file, and there is some output. Hello, our JavaScript JS file is connected with HTML file. So in this way, we can connect our HTML file with our script file. So any scripts you written here, any program you write here, it is rendered on your what? On browser.
तो मैंने बताया ना कि there's something, JavaScript is a scripting language or a programming language which interacts with browser as well as what server. So you can write JavaScript is a programming language which can connect with our browser or server. Server means backend. So JavaScript इतनी powerful है, it is a most powerful language which can connect with both our browser and server. देखो, some of the languages are only for servers and some of the languages are only for the browsers. It means your normal HTML CSS is only renders on the browser. Similarly, if you are working on something like language like Ruby on Rails, Python, then it is what they are, the server side languages. They connected with server, they gives you a response, but it not interacts with your browser. It not interacts with your browser. But JavaScript is why powerful because it connects with our browser and as well as server. So it have two functionalities. It can be rendered on your browser as well as it interacts with the server. Is it clear? Clear है sir. So why JavaScript is powerful? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि it will connect with browser, जिसको हम client भी बोलते हैं. Browser means client. It will connect with your client side as well as server side. So you can write JavaScript helps this work for सागर भाई कैमरा टर्न ऑफ कर लो. sorry. JavaScript is work for client-side rendering as well as server-side rendering. Client-side means browser side, sorry, and server-side means when you connect your backend code, then it will just render server-side rendering. So ये आपके client-side पे और server-side दोनों पे render कर सकता है. तो right now I am looking to connect our JavaScript with client side, means your browser. So front end में, in front end, JavaScript is helpful for what? Client side rendering or on a browser. It will renders on the browser. So यहाँ पे हमारे पास JavaScript क्या हो गया? Connected हो गया आपके browser के साथ. When you write some scripts here, then it will renders on your browser. So this is the benefit of what? JavaScript. Now we are going to learn what is functions, what are the benefits of function. We all, for example, just for example, if I am going to write something like this, variable a is equals to 5 here. So actually we have something is what we can alert this a. So how can we alert this a? This, when we write alert a, save this file, then when we refresh the page, okay, JavaScript, okay, my first alert is executed here. So I'm going to comment this alert, and now I'm going to refresh. Then 5 output is coming from the variable a. So यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि we are just going to connect our script file in body of the what? In body of the HTML file. There are different way to connect the script tag, which is in head of the HTML file. So now I'm going to comment this line of code, which is line 11, and now I'm going to connect in the head. So what problems we will face? I'm just going to explain this. Like if we give script type is what? Script type is text / JavaScript
and I'm going to paste in the string, and then after when we provide src, src is what? Script.js, and just close the script tag. So what happens here, when we save this file, so now our script is connected in the head of the HTML. So problem is that we have some h1 which is in body, and we have something which is in head. In head we have first file which is a style file, and second is a script file. So when it renders, firstly it renders our head files which is in the head of the HTML file. So when I refresh the page, when I something like this, when I refresh the page, our HTML has been what? Has been gone from the screen, because our script tag is now in your head of the body. तो जब तक आप इस पे ओके नहीं क्लिक करोगे तब तक ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा. जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये बॉडी के अंदर की चीजों को रेंडर नहीं कर पाएगा. तो व्हेन यू ओके हियर, देन आवर HTML is rendered. So ideally we have to connect our HTML to script in our body, because if something performs from JavaScript, जब तक वो सब कुछ परफॉर्म नहीं कर लेगा तब तक आपके HTML को रेंडर नहीं होने देगा. So we have to paste our script file where? In body of the HTML file, not in head tag. Because अगर आप ऐसी कोई भी फंक्शन या ऐसा कोई भी प्रोग्राम लिख दोगे और वो अगर एग्जीक्यूट अभी हो रहा है तब तक your HTML file is what? Blank. So we use a script tag in where? Body of the HTML file. So is it clear for all of us? क्लियर है सर. यस सर. यस सर, क्लियर सर. Okay, nice. सर एक डाउट है. Yeah. सर अगर ये जो फाइल आपने लिंक किया है इसे हेड और बॉडी दोनों में ऐड करें, मतलब लिंक कर दें तो क्या होगा? तो लाइक आप मतलब वो जबरदस्ती कर रहे हो कि इट इज लाइक कि यू आर गिविंग अ path which is on head as well as in body. So firstly it renders, it will connects with head file, और जैसे वो head से connect होगा और something which is running in your script file, और वो जब तक complete नहीं होगा आपकी HTML की body के अंदर वो जाने ही नहीं देगा. तो ideally you have to connect your script with what? In body of the HTML file. Reason behind is that कि आप क्या चाहते हो कि आप अपने HTML को कुछ एक्शंस प्रोवाइड करवाना चाहते हो. तो जब तक वो HTML रेंडर नहीं होगा तब तक आपके पास उस स्क्रिप्ट का क्या ही मतलब है. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सम बटन हियर एंड यू वांट दिस बटन परफॉर्म सम एक्शन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो मान लीजिए इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस बटन एंड click me. What? Click me. Button, click me. So when you refresh the page, we have something click me button. But if this script is in your head tag, तो पहले तो ये अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा. तब तक के लिए आपका कुछ भी बॉडी टैग it is not visible on your screen. So what you will do with the action, जब आपके पास कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोई HTML एलिमेंट ही नहीं है. ये बात समझ पा रहे हो? जी सर. So that's why we have to give your script tag in what? Body of the HTML file. Ideally. सर कुल मिलाकर हमें बॉडी में लिंक करना चाहिए. Yeah. ओके. Okay. So we are talking about these things later in DOM manipulation. So abhi this is only what? Linking of your script in your index.html file. But how you interact your HTML codes with JavaScript, we will talk these things in DOM manipulation lecture. So I'm going to write something here. सर एक क्वेश्चन है. Yeah. सर जैसे कि आपने ये स्क्रिप्ट जो लिंक की है ये बॉडी में कहीं भी लिंक कर सकते हैं या फिर सबसे ऊपर लिंक करें? नहीं. In body you can
you can paste मैं anywhere. एक क्वेश्चन पूछना था कि इसमें मतलब आपने बताया ना कि इसको बॉडी में भी ऐड कर सकते हैं और हेड में भी ऐड कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? तो अभी तो एक कहानी है ना, सारा रामायण बीत गया, तो वही तो बता रहे थे अभी इतनी देर से। सॉरी। मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर आप हेड पे करोगे ना तो आपके HTML टैग्स रेंडर ही नहीं होंगे, और जब तक वो HTML टैग्स रेंडर नहीं होंगे तो उस एक्शन का आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। मान लो कि आप किसी बटन को एक्शन दे रहे हो, बटन ही रेंडर नहीं करे, तो यूजर को क्या पता होगा कि उस बटन पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है? तो फर्स्टली यू हैव टू रेंडर सम HTML, देन यू हैव टू गिव सम फंक्शनैलिटी ऑन इट ना। इज इट क्लियर? जी, तो इट मीन सर जो भी हम लोग JS की जो भी फाइल हम लोग लिंक करेंगे वो हम बॉडी में ही करें? Yeah, you can prefer, and for right now I'm writing something, so सर understand. एक क्वेश्चन हो रहा है। Yeah, give me a second, then after I'll come on you. Okay, so for interaction of HTML with our JavaScript, is covered when we read what DOM manipulations. So अब यहाँ पे क्या होगा कि how to interact your HTML code, like how to give some functionality to button, for some functionality to any HTML tag, कैसे उसको कुछ functionality देना है, and we know that functionality is handled with JavaScript. So how can we give some functionality to HTML tag? This things we will clear when we read about DOM manipulations. DOM stands for Document Object Model. So when we read DOM manipulations, we will talk about something new, something different. So how can we interact our HTML tags and give some functionalities to it? We will read, or we will talk about in DOM manipulation. So for now, I'm going on the topic, which is what? JavaScript functions. Okay. किसका क्या डाउट था बताओ? सर ये पूछना था कि ये जो लिंक जो जावास्क्रिप्ट की जो लिंक वाली लाइन होती है वो जो बॉडी के कहीं भी बीच में लिख सकते हैं या सबसे ऊपर ही लिखना जरूरी है? आइडियली आप सबसे नीचे लिखना चाहिए हमें। ओके। आप किसी लाइक मिनिफाइड वर्जन पे जाओगे तो आइडियली वो क्या करते हैं, बॉडी के नीचे वो डाल दिया होता है। जी सर। और ये अभी इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि व्हेन वी यूज React for project building, तो दे आर डिफरेंट अप्रोच टू डूइंग दिस थिंग्स। उसका डिफरेंट अप्रोच है, तो वो कहानी तुम्हें समझ में आएगी व्हेन we'll proceed in. Okay, so let's start with our JavaScript functions. So now we have a clear concept. JavaScript. My screen is visible now? यस सर विजिबल है। Okay. JavaScript functions are something which perform what? A particular task. किसी भी रिपीटिव टास्क को कराने के लिए हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस यूज करते हैं। ओके, दिस इज फिजिबल, यहां तक हमें समझ में आ गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि एक्चुअली वी हैव two types of functions. First is predefined functions in JavaScript. I'm going to write predefined functions in JavaScript, RIPT, and second is what? User-defined JavaScript functions. User-defined means user-defined functions or custom functions. Custom functions means जो आप build करते हो अपने requirement के लिए. Some functions are built by JavaScript itself, which performs a specific task, and some functions you can build for your own task. मतलब जो JavaScript functions provide करेंगे उनकी अपनी specific meaning होगी,
स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा, और जो आप क्रिएट करोगे ये आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करोगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर सच फंक्शंस which you make for your what? For your own task, for to perform your own task. But predefined functions in JavaScript have some specific meaning. So let's start with predefined functions. So here we have something alert, right? Alert is a predefined function by JavaScript. Alert is what? A predefined function. It means that when you use this alert keyword, then in JavaScript engine, there is a specific meaning of this alert keyword. So when you call this alert, then it performs some specific action. So something like this, when I hover on it, it gives something this function alert message and it returns void. सर ये जो ऊपर आप ब्लू लाइन में दिख रहा है, आपने जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, ये फंक्शन का सिंटेक्स लिखा हुआ है। यस, तो ये बता रहा है कि आपका फंक्शन किस टाइप का है, ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। बट इतना समझो कि व्हेन आई राइट अलर्ट, तो आपका जावास्क्रिप्ट समझ गया, जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड्स दिस कि alert is a what? A function. Alert is what? A function. So when I am going to console alert, console.log, in console we can print anything of JavaScript. Like when I write something alert and hit the enter, then it returns f. F means a function. Function means this is a specific function which is in JavaScript engine. So we have a alert. Similarly, when you write something like this, alert, so function f alert some native code. It means it has some code which is inside the alert function, which have some specific meaning or which can perform some specific task in JavaScript. तो जब भी आप alert को call करोगे, तो it performs some actions जो कि predefined है JavaScript के engine में. Similarly, when you write something like this, what we have prompt, right? Prompt is also an inbuilt function of JavaScript. When I hit the enter, then it returns some what? Function, prompt, and native code. So in native code, we have some specific line of codes which have some specific meaning or which can perform some specific tasks. Is it clear now? Yes, sir. Okay. So now I'm going to so what is something? So we have now cleared a JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. So some of them are which is predefined and some of them are user defined. User defined means you have to make your own function to perform any task. Okay, so now it is clear. So there's two things. Okay, it is clear now. So in functions, I'm going to write. Please mute yourself. जिनकी ओर से आवाज आ रही है. So in functions, we can call the function. We can call the function with what? With this parenthesis, like small brackets. When you just you have to call any function, just write this line of bracket just after your function. For example, if I want to call this alert function, which is a predefined function, I only have to write what? Alert and this and this. When I hit the enter, then it returns some pop-up. तो समझ रहे हो ना? If you have to call any function, just you have to put the two brackets, small brackets, just after the alert keyword. Similarly, if you want to call the prompt function, you have to write what? PROMPT, and just after this, we have to paste two brackets. When we hit the enter, then this function should be executed.
Is it clear? So if you have to call any function, you have to paste what? You have to paste the two brackets just after your function keyword. Okay. So there are a number of inbuilt functions जो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो इनबिल्ट फंक्शंस जानेंगे. सो अभी के लिए जैसे हमने अलर्ट यूज किया हुआ है, प्रॉम्प्ट यूज किया है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइंड है, उनकी डेफिनेशन पहले से डिफाइंड है. इफ यू कॉल दिस फंक्शन एंड जस्ट पेस्ट दिस टू लाइन ऑफ ब्रैकेट्स, देन जावास्क्रिप्ट इंजन समझ जाता है कि ओके, you want to call this prompt function which is predefined function. So yes, it returns some code. When it returns, then it just gives some output in the form of what? Pop-up. Is it clear now? Abhi tak? Yes, sir. Yes, sir. So I have written here, a JavaScript function is executed when something invoked it. Invoked it means calls it. So how can you call any function? Just after the keyword, you have to paste these two small brackets. I know it is going to be quite complicated, but these are the building blocks. और इसको बहुत प्यार से जितने अच्छे से समझोगे सब, तो I hope कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें. और this is a very important part of the JavaScript. So without functions, we can't do anything. We can't perform any action. Okay. So now we have cleared about what? Ki how to call any function or how to invoke any function. Invoke or call means same. These have same meanings. If you invoke any function, it means you call this function. If you call any function, it means you invoke this function. Okay, so we have two functions, predefined and user-defined functions. Okay, so let's start. Now it is clear. It is clear now. Okay. सर प्रॉम्प्ट जो फंक्शन आपने अभी बताया ये सिर्फ इनपुट लेने के लिए होता है? Yeah, it is used to take some inputs from the user. So it is specified, it is predefined in your JavaScript engine. So when you call prompt, it always takes the input as an argument. तो वो हमेशा इनपुट ही लेगा. हेलो. या सर अमित सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसको कॉल भी करना पड़ता है? ऑब्वियसली. जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हेन डिफाइन करना पड़ेगा सर उसको? या देखो, मैं अभी डिफाइन करने वाला जो सेकंड फंक्शन है टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसकी बातें अभी हम आगे करेंगे. बट व्हेन यू यूज एनी जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट फंक्शन और प्रीडिफाइंड फंक्शन, if you just write their name, so it returns a function, only a function prompt. But if you want to perform some action from this function, then you have to put these two brackets just after your keyword. When you hit the enter, then your browser responds or it gives some output. So when you not call any function, it not performs any action. So कभी भी किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, if you want to execute any function, you must have to call these functions. Because before अगर आप कॉल नहीं करोगे, it can't be possible कि वो फंक्शन कुछ भी परफॉर्म एक्शन करेगा. तो this is very important. Okay. Now it is okay. Okay. So let's start. Okay. So now I'm going to write something, some functions here in our JavaScript code editor. So, okay. I'm going to write some custom functions or a user-defined functions. User-defined functions means users are you. तो आपने कुछ अपने फंक्शंस बनाने हैं, तो आप कैसे बनाओगे? So I'm going to make some function here. If you want to create any function, you have to start with function keyword. We have to start with function keyword.
I'm just going to write something. This is a what? A definition of the function. Definition of the function. Definition means you have some code inside it. So this, if you want to create any function, you have to write firstly function keyword, and just you have to give some name to that function. If you want something like this name, print name, print name. So this is your function name, just like what? A prompt. So this is your function name. So you have to start with a function keyword, then you have to write your function name, then you have to start with these two curly braces. I'm going later on what these curly, not these curly braces, this is small brackets. I'm going on later on what is the meaning of this brackets. So firstly, you have to give the keyword name, then you have to give your function name, then you have to put these two brackets, and then after you have to start with curly braces. In curly braces, you write your what? Any action, any code. If you write inside this function, then print name have some definitions. So if I want something like this, what I can write? I can write alert, something alert, and I'm going to hello. This is our what? Custom function. This is our custom function. Okay. So now our function is ready. Our custom function is ready. Our user defined function is ready. You have to put the function. Then you have to put his function's name. Then you start with these two brackets, and in curly braces, you write your piece of code. You write your piece of code. इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो. आप इस name की जगह कुछ भी use कर सकते हो. Do whatever you want to do. Okay. Now I'm just going to call this function from here. So for calling the function, we have to do what? Print name, and print name returns the function. So if we have to call this function, we have to give these two brackets here. So ये print name क्या हो जाएगा? Call हो जाएगा. आप समझ पा रहे हो? मैंने पहले फंक्शन का डेफिनेशन दिया, and from here we are going to call this function. So this is the definition of the function, and this is when you call this function. जब भी आपको requirement है, you can call from anywhere you want. Yeah. Yes. सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि आपने जो प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट नेम, यहाँ पे बस एंटर प्रेस करना है और फंक्शन कॉल हो जाएगा. Yes, अभी तो आपने यहाँ पे दे दिया, और जब आप कंट्रोल एस करोगे, और when you go on the okay, this is not saved. I think your index.html file is not saved here. Okay, when you go and refresh your web page, then yes, this function has been rendered. Hello, this is our custom function. But what's the problem in it is this. Okay, so actually our function has been rendered here. Print name. If you want to call this function, print name from here, like if you want this print name here, print name in your console, and if you hit the enter, then it returns some function. But when you call this function from here, like print name and call this function, then it returns some output. Hello, this is our custom function. So this have some specific meaning जो कि आपने अपने फंक्शन के अंदर अलर्ट दिया हुआ है. सर इस फंक्शन को जैसे अगर हम बटन के थ्रू कॉल करना चाहें, जिसमें क्लिकिंग वाला बटन पे क्लिक करें तब ये फंक्शन चले. ये मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन व्हेन वी आर कवरिंग द DOM मैनिपुलेशन लेसंस. ओके सर. हाउ टू इंटरेक्ट योर HTML कोड विथ द जावास्क्रिप्ट कोड. तो ये जो नेम है, ये क्या फंक्शन का नाम है? यस, दिस इज योर नेम. आप कुछ भी डाल सकते हो, अपने मन का भी डाल सकते हो. तो दिस इज योर custom function. Okay, so let's start something new, but I want something like this. Okay, after this I'm going to write something like this. What?
So I want something which is for addition of the two numbers. I want some function. कोई आपको बोलता है कि write a function which add two numbers. Write a function which add two numbers. Okay. So I'm going to write something this like function add numbers, and now we have this bracket, and then we have some curly braces. We have two curly braces and then start. Okay. Now I'm going to give something like this, what, where total is equals to 2 plus 3. 2 plus 3. Okay. So now we have one important keyword, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं. Important keyword is what? console.log. प्लीज मेक श्योर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं. Okay. Okay, so I'm going to start with what is console.log. Console.log. This is also a function, predefined function, which prints the output in JavaScript console. So console.log is also a predefined function in JS which prints the data on your what? On your browser. Browser means client. So if we will go and just refresh the page, okay. So if I write something like this, console.log, right? If I hit the enter, then it returns the function, right? And if we want to call this function, give me a second. If you call this console.log with these two brackets, then it just returns undefined. But आपने क्या किया? फंक्शन को कॉल कर लिया है. तो इन console.log something like this, मैं अभी आप लोग इस पे फिर दोबारा आऊंगा, सो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. आई वांट कि console.log and I want to give total in console.log. Don't worry, I'm just coming what is why we put this total in console.log. I'm just going to print this total value in what? In your console browser. Okay, now I'm just going to call add two numbers and okay, refresh the page. I'm going to just call this add two numbers. So now I'm just going to refresh the page, and yes, we have something output which is what? A 5. So our console.log is what? Console.log is a something which just prints the output in your console browser. So मैंने console.log total किया, तो it gives some returns a variable total 2 plus 3 which is equals to 5. बट यहाँ एक डाउट आ गया, यहाँ एक प्रॉब्लम है कि मैंने क्या बोला था कि वी विल मेक अ फंक्शन टू डू सम रेपिटिव टास्क, राइट, टू परफॉर्म सम एक्शन. बट हियर इन add numbers function, I am just going to add 3 plus 2. What if the values of this will change again and again? For example, if you want to add something like this, what? 5 plus 5, then you have to make some another function. Add number again, this and this. Now variable total is equals to 5 plus 5. And if you just go to console.log, what? Total, right? And if you call this functions, add what? Add number again. This is your defined function, right? And I'm going to just comment out this. And if you call this add numbers again, then it will return 10, right? So if I'm going to refresh the browser, so it returns 10.
So now यहाँ क्या हुआ कि you have written two repetitive functions which performs the same task. Only the problem is that you have two different inputs. Problem तो यही है ना, काम तो दोनों सेम कर रहा है, काम तो दोनों सेम कर रहा है. Only problem is what? You have two different inputs. In first function, you have these inputs 2 plus 3, and in second function, you have two different functions, two different inputs, which is 5 plus 5. Is it clear now? If you want to add something like 10 plus 15, you have to make some another function to perform this action. Is it clear? तो यहां प्रॉब्लम क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट में, इन योर प्रोजेक्ट, you want a multiple times of adding two numbers, but the numbers are different. Then you have to make a multiple functions for it, right? So for this problem, we have something which is in function, which makes the function very powerful, is that what is something like this. If you write some function, add number, and in this bracket you take some arguments. So first I'm just going to give here something like this: a and b. This a and b are the parameters of the function. ध्यान से समझना. For add numbers, a and b are the parameter of that function. So now we can just start here, and if we write some program in it, something like this, where total is equals to a plus b, right? And then after, I'm going to console.log what? Total. Okay. What are these a and b? So a and b are the parameters of this add numbers function. So a and b are what? A and b are the parameters of this function. Okay. When you give me a second. Yes. So let's start. So we give these two input as a parameter of the function. So a and b are the what? Parameters of the function. Okay. Now you are going to call this function. How can you call this function? You give add numbers, and whatever you passed in this calling of the function, if you want to call this add numbers, you have to put the two small brackets here, and when you pass some input here, this is just equivalent to a and b, something like this. If you pass 3 and 4 here and just call this function, then a is equal to 3 and b is equal to 4. It means when you call add numbers with these two parameters, then a is equals to 3 and b is equals to what? 4. Because in this bracket, it accepts two input. So now you can see that function add numbers can accept two parameters. Function add numbers can accept what? Two parameters or inputs. What are these inputs? These inputs are a and b. So when you call this function from anywhere and provide some input, then a is equals to 3, b is equals to what? 4. So if you want to give some more argument here, if you want to add some more parameter, like if you want to add c, d, e, then
what you have to do, you have to pass 4 parameters from here. Is it clear? If you have added 5 parameters, then what you have to do, you have to give 5 inputs from there. So what it is assuming, add numbers assume that A is equals to 3, B is equals to 4, C is equals to 5, D is equals to 3, and E is equals to 5. So in our सर एक case, क्वेश्चन है yeah, सर, जैसे कि आपने यहाँ पे 5 पैरामीटर्स जो है डिफाइन किए और इसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन में कॉल करना है तो वहाँ भी 5 ही इनपुट्स लिखने हैं या फिर कम भी लिख सकते हैं? नहीं, तो आप जितने इनपुट्स आप अपने फंक्शन के डेफिनेशन में जितने इनपुट्स आप एक्सेप्ट करने के लिए दिए हुए हो, उतने इनपुट्स तो आपको भेजना पड़ेगा ना। नहीं तो फंक्शन बोलेगा कि भाई आपने तो 5 इनपुट्स हमें चाहिए, आपने तो मुझे 3 ही इनपुट प्रोवाइड किया। तो इफ यू आर डिफाइन 2 पैरामीटर्स हियर, देन यू हैव टू पास 2 इनपुट्स फ्रॉम देयर, from when you call your function. Now Okay. A is equals to 3 and B is equals to 4. So when you call this, I'm just going to save this file, Control S, and it returns, yes, it returns 7 because it takes A as a 3 and B is equals to 4. So now I'm just going to what we have done. A is equals to 3 and B is equals to 4. So 3 plus 4, which is 7, and 7 is stored in what? This total variable. And now we are just going to do what? Console.log total. So total is equals to what? 7. So console.log 7 is equals to what? 7. For example, if I give console.log and here I give 7 as an input in the console.log. देखो console.log भी फंक्शन है, तो इस फंक्शन में मैंने 7 पैरामीटर पास किया है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आप इसको कॉल तो यहां से कर रहे हो, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जावास्क्रिप्ट इंजन इसको रन करेगा एंड देन इट रिटर्न्स सम आउटपुट व्हिच इज व्हाट? दिस पैरामीटर। तो व्हेन यू रिटर्न, देन इट रिटर्न्स 7। सो हियर यहां क्या हुआ कि व्हेन यू गिव 3 and 4, so 3 plus 4 is stored in the total variable. So now total is equals to 7. So when you console.log 7, then it prints what? 7. Similarly, now you can do multiple add numbers. For example, if you want to add numbers, and now you can add, if you want, like you want to add 10 comma 10 and comma 10. So I'm going to, so from 43, when you call add numbers from 43 line number, then it returns what? 7. And from second, when you call this function second time, then it gives what? 10 plus 10, which is stored in total. So console.log total, the total की value 20 है, so console.log 20 is equals to what? 20. So now do whatever you want to do with this function. If you want to paste, like you want to add of 4 comma 4, you want to add something like 1 comma 10, you want to do something like 11 and 19. Similarly, you want to do something like 100 and 1000. So refresh it, Control S. So in first it gives the output of 7, in second it gives the output of 20, in third it gives the output of 8. Similarly, in last it gives the output of 1100. So अब समझ में आया कि why functions is important? Because आपको अगर ये 5 बार ऐड करना होता या 6 बार ऐड करना होता, तो आपको क्या करना पड़ता? हमेशा क्या करना पड़ता कि where total 1 is equals to what? 3 plus 4. Similarly, where total 2 is equals to what? 10 plus 10. Similarly, where total 3 is equals to 4 plus 4. Similarly, if you want 50 times a value, then you have to add 50 times. So now it is very simple. क्या हुआ कि आपने डेफिनेशन तो एक जगह लिखा, लेकिन जब भी आपको 2 नंबर का एडिशन चाहिए, आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया. Similarly, if you want some multiplication, then you have to do what? Function multiply number, and if you take 3 arguments here,
Just for example, ABC, and now you have something like where data is equals to A into B into C. So when you call this function, just for example, multiply 2, 3, 4, तो अब आपको क्या करना था कि 2 into 3 into 4 क्या होगा? 2 into 3 6, 6 into 4 24. So now when you call this function, then it returns what multiply number A comma B. Okay, so we have dot log. console log नहीं लिखा सर. Yeah, so data. So now I'm just going to refresh our page. Then it gives some output which is equals to what? 24. तो समझ में आ रहा है? This is called a function definition. This is called what? A function definition, and this is called what? A function calling. So this is a function calling and this is a function definition. आप कहीं से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो. मान लो कि आपने फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ लिख दिया, आपको मन है, मान लो कि आपने यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है और आपको लाइन नंबर 1000 समथिंग पे आपको क्या चाहिए, A इंटू बी इंटू सी की डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, सीधा उस मल्टीप्लाई नंबर को कॉल करोगे और जितने आर्गुमेंट्स यू हैव डिफाइंड यू हैव टू गिव सम दीज आर्गुमेंट्स एंड इट विल रिटर्न सम वैल्यूज सो यू कैन यूज फर्दर. तो भाई क्लियर है? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? व्हाट आर फंक्शंस, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फंक्शंस? Yes, Clear sir. है सर. Anyone have any doubt जो अभी तक पढ़े हैं? सर तो कंसोल डॉट लॉग लिखना गुड प्रैक्टिस है या नहीं है? Yeah, it is like console.log is something. If you works on the like live projects as a developer, then console.log helps you a lot. Like मान लीजिए, just for real example, कि क्या हो रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, you are working on some project which is quite big, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में सर्व हो रहा है. इट विल सर्व इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट कंट्रीज. ओके, सो मान लो कि आपका कोड फट गया. मतलब देखते हो ना कि कभी क्या होता है कि आप कोई वेबसाइट्स यूज करते हो या मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करते हो, वो एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है एंड एक मैसेज आता है कि प्लीज रिपोर्ट अ बग. देखते हो प्ले स्टोर्स पे when you are using any application, Yes, sir. if you find some bug कि वो एकदम से बीच में क्रैश कर गया और फिर एक मैसेज आता है, एक पॉपअप आता है कि प्लीज रिपोर्ट योर बग. तो सर यूजर ये व्हाट्सएप पे भी हुआ है और इसके अलावा भी 2-3 एप्लीकेशंस पे फेस किया है. वो क्योंकि देखो डेवलपमेंट इज समथिंग लाइक कि यू विल बिल्ड समथिंग न्यू एवरी डे, और हो सकता है कि कोई कोड है जो कि काफी पुराना हो गया और वो फट गया. तो एज इन डेवलपर थिंकिंग हम लोग उसको बोलते हैं कोड फटना. ऐसा अगर कहीं कुछ क्रैश हो गया तो क्या होता है कि आप यूजर हो, आपने एक बग रिपोर्ट कर दिया कि भाई मैं बटन क्लिक किया था और ये बटन क्लिक करते स्क्रीन गायब हो गई. तो ये जो बग होता है ना, तो जब वो प्रोडक्ट टीम के पास जाता है तो प्रोडक्ट टीम सीधा डेवलपर्स को भेज देते हैं कि भाई हमारे यूजर्स ने ये बग रिपोर्ट करा है, हमारे यूजर्स को ये बग आया है. समझ लो कि दिस काइंड ऑफ बग आर यूजर फेसिंग करेंटली. तो मान लो इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी लाइव प्रोजेक्ट और आप 12 बजे रात को सोए हुए हो बहुत अच्छी नींद में, और एकदम से आपके टीएल का, आपके मैनेजर का कॉल आएगा कि यार इन ऑस्ट्रेलिया they are facing some bugs and we have to fix on an urgent basis. ठीक है, अब आपके यहाँ रात हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में वो दिन हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स ने कुछ बग फिक्स किया, आपके मैनेजर के पास कॉल आया, मैनेजर्स जस्ट कॉल यू एट 12 PM कि भाई ये बग है और जल्दी से हमें फिक्स करना है बिकॉज क्लाइंट हमारा काफी परेशान है. आप उठोगे तो आप क्या करोगे? तो यू हैव टू फिक्स दिस बग. एंड हाउ कैन यू फिक्स दिस बग? This console.log helps you a lot. Something like this. I'm just going to show something like this. We have some project. Okay. Yeah, I'm just going to give some example. Okay. Yeah. Screen is visible, huh?
Yeah. Yeah. So here there are a lot of codes. दिख रहा है ना कितनी कोड है? This is not a single line of code. We have approximately in one file we have a like 773 line of code. Similarly, if you go, this is a React project. So if you go on about validate, there are some codes. If you are going on funding pages, there are a lot of code. Something आपके पास इतने पेजेस है, बहुत सारे कोड है. एंड डेवलपर्स को क्या हुआ कि डेवलपर्स कहीं फाइंड किया कि व्हेन he is on, just for example, when he is on sign in page, he faced some bugs. He faced some bug कि जब वो क्लिक कर रहा है साइन इन बटन को तो उसको कुछ बग मिला. यूजर ने आपको रिपोर्ट कर दिया, आपके मैनेजर को रिपोर्ट कर दिया, मैनेजर ने आपको उठाया कि भाई प्लीज वी हैव टू फिक्स दिस बग ऑन एन अर्जेंट बेसिस. तो आप क्या करोगे? आप देख के तो पहले घबरा जाओगे कि भाई ये बग का. तो हम क्या करते हैं, वी गो ऑन दैट पर्टिकुलर फोल्डर, और जब वो फंक्शन कोई कॉल हो रहा होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ देखना, दिस इज अ साइन इन बटन, ये रिएक्ट का कोड है ना. तो ये साइन इन का एक हमारे पास बटन है, और इस बटन पे, जो कि ये साइन इन बटन तुम्हें दिख रहा है, इस बटन पे हम कुछ फंक्शंस को हैंडल कर रहे हैं. ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया है हैंडल लॉगिन. आपके ऊपर से जा रहा होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओनली कंसर्न इज व्हाई वी यूज console.log. तो मैं क्या करूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गोइंग टू npm start. Yeah, it can start. Okay, so handle login, this function is calling on the sign in button. I'm going on the handle login and it receives the two state, username और password. अगर मान लो just for example कि इस handle login पे हमें debugging करना है. This is the process which is called debugging. कि if you face any bug, then you have to firstly debug this bug, and now after debugging the bug we have to fix like this. कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, ध्यान से समझना बिकॉज ये इंटरेस्टिंग है, और फिर आगे समझ में आएगा कि व्हाई वी यूज दिस डेटा. सो ओके सो if you are working on any live project, right, and on login button press, user is not logged in, it just returns some blank page. This is bug. ये बग आया कि जब यूजर लॉग इन कर रहा है तो इट रिटर्न सम ब्लैंक पेज. तो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें क्या करना पड़ता है अगर ऐसे कोई बग रिपोर्ट किया, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने डेटा को पकड़ते हैं कि भाई मेरा डेटा कहाँ तक सही जा रहा है. समझ लो मेरी बात को, कि मान लो कि आपने जस्ट फॉर एग्जांपल हियर यू मेक अ फंक्शन, तो आपने कुछ डेटा प्रोवाइड किया ना 2 3 4, तो ये फंक्शन कुछ फंक्शनैलिटी दे रहा होगा, कुछ जो डेफिनेशंस लिखे हुए हैं वो परफॉर्म कर रहा है. तो व्हाट इज दिस कि यू फेस एनी बग, वी हैव टू फिच कि डेटा एक्चुअली अभी हमारा कहाँ है प्रोग्राम में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फाइल्स, और आप डायरेक्टली देख के ट्रैक नहीं कर पाओगे कि कहाँ तक हमारा डेटा पहुंचा और कहाँ पे हमारा जाके डेटा फट गया. तो जस्ट फॉर एग्जांपल हैंडल लॉगिन इज अ सिमिलर फंक्शन जो कि हम अपना बनाते हैं, बट यहाँ बस ये क्या है कि हमने एरो फंक्शन यूज किया है, ये हम आगे पढ़ेंगे ES6 में. तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन. देख रहे हो ना, कॉल हुआ, कॉल में पैरामीटर यहाँ पे ब्रैकेट किया. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए कि भाई क्या मेरा यूजर नेम और पासवर्ड पहुंच भी पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट console.log and here I will give what username and I am just going to pass username. आप बोल रहे हो कि सर 2 आर्गुमेंट आपने पास कर दिया. तो यस, इन console.log यू कैन पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स. मैं अभी इसको क्विक फिक्स कर देता हूँ. ओके, open external device. Why this happened? Give me a second. ओके, या मैंने कंसोल कर लिया. तो जब भी आप हैंडल लॉगिन के बटन पे प्रेस करोगे तो ये console.log जो भी डेटा उसके अंदर होगा वो डेटा लाके हमें अपने एक ब्राउजर पे दिखाएगा. तो हियर इज आवर प्रोजेक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी लोडेड.
Yeah. Give me a second. Why it happens? Okay. Student. Good. Okay. It has some loaders functionality which is given, so I have to fix this loader functionality क्योंकि loader हमारा हमेशा true हो जा रहा है. तो I'm just giving कि मैं जब यहाँ पे console बस इतना समझ लो कि when you write console.log username, so ये जो data यहाँ पहुंच रहा है उस data का हमारे पास क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा. तो जो भी हमने डेटा इनपुट में दिया होगा वो डेटा हमें यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा. तो नाउ वी विल लाइक कि यस हमारे ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, यहां तक डेटा आ रहा है. उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी हम उसके आगे काम कर रहे होंगे उसके आगे console.log लगा के चेक करेंगे कि क्या वहां तक हमारा डेटा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. फिर जहां पे हमें डेटा नहीं मिलेगा फिर वहां पे हम उसकी फिक्सिंग स्टार्ट करेंगे. मेरी बात को समझ पा रहे हो? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि console.log, why you use console.log? तो console.log यूज फॉर डिबगिंग योर कोड कि तुम्हारा डेटा का ट्रैकिंग मिल पाए कि डेटा एग्जैक्टली अभी हमारे कोड में कहां पहुंचा हुआ है, और जहां पे वो फट रहा होगा तो हमें वो कोड का आइडिया मिल जाएगा कि इस जगह पे हमारा डेटा क्या हो रहा है, फट रहा है. तो यहाँ वी हैव टू मेक सम चेंजेस. इज इट क्लियर? यस सर. सर मतलब हम लोग console.log इसमें लिख देंगे अपने कोड में, और उसके बाद ब्राउजर पे जाके हम लोग इनपुट देंगे फॉर्म में. देखो, not just example of prompt. If you run any function or any program, then जो HTML फॉर्म होगा ना हमारा, या HTML फॉर्म, उसके अंदर हम लोग इनपुट देंगे और वो हम लोग कंसोल में चेक करेंगे. एग्जैक्टली कि वो डेटा कंसोल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा. अब वो किस फंक्शन से क्रॉस हो रहा है. मान लो कि यू राइट समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे हैंडल लॉगिन है, हो सकता है हैंडल लॉगिन के बाद कुछ ये हैंडल रीसेट ओटीपी कॉल हो रहा होगा, है ना. तो अब ये ओटीपी को रीसेट करने के लिए एक फंक्शन हमने बना रखा है. अब अगर ओटीपी में प्रॉब्लम है, इफ ओटीपी ही नहीं जा रहा है, तो हम कहाँ चेक करेंगे आके अपने console.log को, कि हम अपने recent.otp में आके अपने कंसोल लगा के चेक करेंगे कि ओटीपी क्यों नहीं भेज रहा है. अब जहां से प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम डिडक्ट करेंगे और फिर उसकी फिक्सिंग करेंगे. तो दैट इज द लाइक रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोग्रामर. अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एज अ डेवलपर, तो आपके लिए दो काम होता है, नए फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करना और पुराने फिक्सेस करना, पुराने प्रॉब्लम्स को क्या करना, फिक्स करना. तो यही काम आपका डेली बेसिस का होने वाला है. तो आप फिक्स कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ console.log. आप डेटा चेक करोगे. जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन योर व्हीकल और आप किसी मैकेनिक के पास जाते हो, तो मैकेनिक क्या करता है, अपने जो भी उसके पास डिबगिंग के टूल्स होते हैं वो पहले आपकी इलेक्ट्रिसिटी के वॉयर्स को देखेगा कि इलेक्ट्रिसिटी वॉयर्स तो कहीं से नहीं टूटे हुए हैं. फिर वो क्या करता है कि क्या कोई इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम तो नहीं है. फिर वो आपके जस्ट क्या करता है, आपके मोबाइल को चेक करता है कि कहीं इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो वो क्या कर रहा है, आपको डिबग कर रहा है, आपके मशीन को डिबग कर रहा है. और जहां उसे कोई प्रॉब्लम मिलता है फिर वो बताता है कि हाँ ये आपका फ्यूज उड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी का फ्यूज उड़ा हुआ है, आपको यू हैव टू चेंज योर फ्यूज or you have to change your plugs. तो similarly in coding you have to track your data कि डेटा हमारा कहाँ तक पहुंचा हुआ है. जहां फट रहा है वो हम फिक्स करना स्टार्ट करते हैं, और न्यू इम्प्लीमेंटेशन में भी हम console.log लगा के चेक करते हैं कि जो हम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं इज इट करेक्ट और नॉट, इज इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड और नॉट. क्या आप तो कुछ भी लिख दोगे और फिर आप डिप्लॉय कर दोगे और आके सो जाओगे. हो सकता है कि आपको करना है, कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करनी है, आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आपने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दिया बट आपने टेस्ट ही नहीं किया, अपने डेटा का टेस्ट नहीं किया. तो क्या हुआ कि कल के डेट में वो जाके रात को फट गया, तो फिर तो आपको गाली पड़ेगी ना. जी सर. तो गाली नहीं सुनना होता है, काम करना होता है हमें. तो अब ये नहीं समझ लेना कि एज इंजीनियर को गाली देने का मतलब कि वो बैठा के तुम्हें ऐसी तैसी कर रहा है, ऐसे नहीं होते हैं. लाइक गाली मीन्स कि आपके कोड को कोई गलत कह रहा है या उसमें प्रॉब्लम्स आ गया. तो प्रॉब्लम्स ऐसा हमें कोड लिखना होता है कि जो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो बाद में. तो हमें वी हैव टू राइट सम ऑप्टिमाइज्ड कोड, सो वी हैव टू मेक सम प्रैक्टिसेस. क्लियर है? जी.
तो किसी के ऊपर से अभी तक जा रहा है अभी? ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए था, सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। वी आल्सो मेड द रिएक्ट प्रोजेक्ट और बहुत अच्छे से बनाएंगे, सीखेंगे सब चीज। तो एनीवन हैव एनी? सर अभी तक आपने यूजर से इनपुट लेने वाला नहीं बनाया। या तो दिस इज अ इनपुट विच इज कमिंग फ्रॉम यूजर ना। देखो अभी जो हम HTML से इंटरेक्ट करेंगे, मैंने अभी बता दिया है यूजर से इनपुट मींस अगर आप HTML से इंटरेक्ट कराओगे तो वी विल डिस्कस इन DOM मैनिपुलेशंस वेयर वी मेक अ फंक्शंस एंड वी मेक अ DOM ट्रिगर टू इंटरेक्ट विद योर HTML कोड। तो अभी आपको बस HTML से इंटरेक्ट करना मैंने नहीं बताया, मैंने बस कनेक्शंस बताया कि आपका स्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट DOM मैनिपुलेशन, then we will talk ki how to interact, how to give some functionality to button, how to interact your input button and give some script functionalities here। तो वो हम DOM में बात करेंगे। अभी तो भी फंक्शंस की बहुत बातें बाकी हैं। अभी तक क्लियर है ना जो मैंने बताया है? जी सर। सर डॉम का पूरा नाम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके ओके, दिस इज नाइस। ठीक है, ओके तो yes, so now I will go to give like a JavaScript function is defined with the function keyword followed by name and followed by parenthesis, which is a what? Small brackets. The parenthesis may include parameters may separated with commas. It means कि जो आप पैरामीटर पास करोगे, you can pass as multiple parameters, बट आपको क्या करना पड़ेगा, वो इनपुट्स आपको अपने फंक्शंस जब आप कॉल करोगे तो वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो देखो अभी बहुत कंफ्यूजन आएंगे, छोटे छोटे कंफ्यूजन की यार ऐसे कौन कॉल करता है। तो देखो जब ये ब्लॉक्स आपके रेडी हो जाएंगे ना, ये कॉन्सेप्ट्स रेडी हो जाएंगे, और जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे तो ये सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। और अगर आपकी ये प्रैक्टिसेस में नहीं होंगी, आपको फंक्शंस का पता ही नहीं होगा, और मैं जाके आपको कोड करके फंक्शंस बताऊंगा या कोई प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा, तो फिर आपके ऊपर से जाने लगेगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये बता दो यार, फिर से बता दो मल्टीप्लाई, ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये एरेज क्या होते हैं। ध्यान से समझना कि इफ यू वांट टू पास as much arguments, like if you want to pass 10 arguments from here, then in parameters you have to receive these 10 arguments. So there is one very important difference between parameters and what? Parameters or arguments. Okay, so we will just going to talk about these things. The code will executed by the function is placed in the curly braces. Okay, if you define any function, then the actual code is inside what? It's curly braces. You can't write something like this कि यहाँ आपने वेरिएबल कर दिया और आके आप यहाँ console.log डेटा कर रहे हो। You have to write all the code inside that curly braces where the function definition is given. Okay, चलो ठीक है। Now start कि there is a very important difference between what? Arguments and parameters. ये पूछते भी हैं किसमें, इंटरव्यूज में, कि what is the difference between arguments and parameters of the function, Okay. Okay, so yes, तो important difference क्या है arguments and parameters में? ध्यान से समझना। Arguments are something which we pass as the input when you call the function. So arguments are something which we pass which we pass as the input. We pass, चलो ये भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो arguments are something which we pass as a input when you call the function. It means कि what are the arguments when you call any function, then you have to pass some inputs because you have to accept these inputs in your function definition. So arguments are that when you call any functions and pass the input
from the function calling, then these are called arguments. And what are the parameters? So parameters are basically which is defined in function definition. Function definitions. It means कि to know that this is a calling of function and this is a definition of function. So in definition of function, we take three inputs. तो ये जो 3 इनपुट्स हम ले रहे हैं, ये तो कुछ भी हो सकता है, जो भी आप पास करोगे. तो these are the parameter of the function. But arguments are these, like in add numbers, 3 and 4 are the arguments. In add numbers, 10 and 10 are the arguments when you call the function. But A and B are what? A and B are the parameters of the function. So what is the difference between argument and parameter? The argument are something which when you call the function and if you provide some input from calling of the function, then these are the arguments. And in the function definitions, when we accept some inputs, then these inputs are called what? Parameters of the function. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. सर बेसिकली Yeah. मतलब जो इनपुट्स हम डाल रहे हैं वो हमारे आर्गुमेंट्स हैं और जिससे हम, मैंने सही समझा ना? जो इनपुट्स आप कॉल करते टाइम प्रोवाइड कर रहे हो, दे आर द आर्गुमेंट्स ऑफ द फंक्शन. एंड जो फंक्शन के डेफिनेशन में इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हो, दीज आर दी व्हाट? पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन. हाँ जी, ओके. या तो इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फंक्शन आते आते ना. देखो कोडिंग तो इज लाइक बहुत कूल चीज है, और जब आपकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होगी तो फिर कोडिंग के अलावा तो आप फिर कुछ देखोगे ही नहीं. आपको मजा आ रहा होगा, रात में 4 बजे तक 5 बजे तक कोडिंग कर रहे होगे. तो क्या होता है ना कि ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते हैं तो कोड में मजा आता है. नहीं तो ऐसा हो जाता है कि फिर गाली देने का मन करता है अपने आप को. यार मैं हम लोगों को फिर पूरा दिन करनी होगी, मतलब सुबह से लेकर के रात में 4 बजे तक. अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. देखो यार, सिंपल एक वर्ड में मैं बताऊंगा, कौन से काम करने में मजा नहीं आता है, पहले बताओ. बैंक का काम करने में. अरे मतलब इट्स नॉट लाइक स्पेसिफिक काम, जिस काम में आप काम तो कर रहे हो बट आउटपुट नहीं मिल रहा है. हाँ सर. आउटपुट इन द सेंस रिजल्ट इन द सेंस प्रॉफिट. यस, इट मीन्स कि आपको रिटर्न में हम सब बैठे हुए पैसे कमाने के लिए. तो अगर आप कोई काम कर रहे हो और एज एक्सपेक्टेड आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि आप उस काम से भागते हो. इट इज लाइक कि यार अरे यार ये क्या ही करना है, पैसे तो इतने ही मिल रहा है ना. बट जब आपको दिखने लगेगा पैसे, आउटपुट मीन्स पैसे, तो फिर क्या होगा कि आप 4 बजे तक क्या, फिर समझ लो जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बैठेगा. तो फिर नींद ही नहीं आएगी. है फिर तो सर नींद ही नहीं आएगी. जब तक मोटी सी सैलरी आ नहीं जाएगी तब तक नींद नहीं आएगी, उसका मुंह करना पड़ेगा. यस, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक आजकल यूएस एंड यूके में क्या होता है कि दे आर जस्ट हायर द डेवलपर्स ऑन द आर्ली बेसिस. लाइक और ये बहुत ही मतलब डेवलपमेंट का बहुत ही कूल ट्रेंड है कि दे जस्ट हायर यू ऑन द आर्ली बेसिस. लाइक दे पेड समथिंग अराउंड $10 to $15 पर आवर. इज इट क्लियर? तो क्या होता है कि वो आपको सीधा आर्ली बेसिस पे हायर करेंगे. 5 घंटे आपको काम करना है तो 5 घंटे के लिए आपको इतने पैसे मिल रहे हैं. लाइक आर्ली बेसिस की कि 1 आवर के आपको $10 to $15 वो पे कर रहा है. और ये इंडिया में भी काफी अब ट्रेंड बन चुका है. Anyone who can do freelancing or in any field, in specific coding field, तो वो सिंपली ऐसा ही होता है कि आपको वो आर्ली का पे करते हैं कि आपके 1 घंटे के इतने चार्ज हैं. ये दिस इज लाइक अराउंड कि ये $20 आपको हम आर्ली पे कर रहे हैं. तो अब मान लो कि इफ यू वर्क ऑन एनी कंपनी और आपको कोई आर्ली प्रोजेक्ट मिलता है जहाँ पे आपको $20 पर घंटे का मिल रहा है, तो आप चाहोगे ना यार 10 से 1 बैठ के काम करना है, 3 घंटे में हमारे $60 आ रहा है.
10 दिन में हमारे $600 बन रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट कि जब पैसे मिलते हैं तो फिर वो दिन और रात नहीं दिखता है, फिर पैसा दिखता है ना। सर आजकल वो फ्रीलांस का ट्रेंड बहुत चल रहा है ना सर। तो ये बहुत कूल ट्रेंड है, और तुम्हें ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इंडिया इज मोस्ट सबसे बड़ा आईटी सर्विस प्रोवाइडर इंडिया आज के डेट में वर्ल्ड में है। हाँ सर। मींस एक्चुअली क्या होता है कि सेम डेवलपर्स जो आपको यूएस में मिलेंगे, तो दे जस्ट समथिंग दे मतलब वो जो डिमांड करेंगे, दे समथिंग डिमांड लाइक 70 to 80 lakhs पर एनम मिनिमम। सेम काम के लिए वो 70 से 80 लाख रुपए पर ईयर मिनिमम वो चार्ज करते हैं, और इंडिया में वो डेवलपर्स आपको 10 to 15 lakhs में मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली तो उनके लिए वो बेनिफिशियल है कि वो 80 लाख में 5 डेवलपर्स हायर कर सकते हैं इंडिया में, और सेम काम के लिए वो 1 डेवलपर हायर कर पाएंगे यूएस में। तो दैट इज द मेन की रीजन कि वो इंडिया में आउटसोर्स क्यों होता है। और दूसरी रीजन ये भी है कि भाई डॉलर महंगा है इंडिया में, वो डॉलर आके 80 रुपए बन जाता है, तो आपके लिए भी वो काफी अच्छा खासा अमाउंट है ना। तो दैट्स व्हाई सर कंपनीज फायर क्यों कर रही है आजकल? सॉरी सर कंपनी आजकल बहुत सारी फायर करी, जैसे हाँ गूगल ने सर, कुछ हमने भी ये न्यूज़ देखी है। आईटी सेक्टर स्टॉक मार्केट पे गिरा है पूरा अभी। देखो एक्चुअली क्या है ना कि मार्केट कैप वर्ल्ड अराउंड गिरा हुआ है, बट इंडिया में भी रिसेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इंडिया में ज्यादा रिसेशन नहीं है, और इंडिया में ये इफेक्ट भी नहीं करेगा उतना। अब भगवान करे नहीं करे, बट नहीं करेगा। दिस इज लाइक जो मार्केट का ट्रेंड है। तो बेसिकली यूएस मार्केट में और यूके मार्केट में जस्ट बिकॉज ऑफ उधर जो रूस एंड क्या बोलते हैं यूक्रेन का चल रहा है ना, इसके कारण काफी कुछ चेंज हो गया है वर्ल्ड मार्केट में। तो दैट्स वाई यूएस में रिसेशन आया हुआ है, बट ये रिसेशन 2008 में भी आया हुआ था। बट अभी के टाइम में इंडिया में कुछ ज्यादा इफेक्ट वो नहीं करने वाला है, वो यूएस को ही करने वाला है इफेक्ट। चैट जीपीटी इसमें बहुत सुनने वाला था, क्या है चैट जीपीटी, इसके बारे में बता सकते हैं? बेसिकली ये ना एक एआई का टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। ये क्या करता है कि इट टेक्स योर डेटा, एनालाइज दिस डेटा एंड गिव सम रिजल्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो कि उसके पास आज के टाइम में ये डेटा है, समथिंग लाइक यू वांट XYZ। अब मान लो कि आपको कुछ चाहिए रिटर्न में, लाइक आप चाहते हो कि मुझे ना कुछ कोड मिल जाए ऐसा जो कि आप एडिंग ऑफ 2 नंबर, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट सम कोड फॉर नेविगेशन बार, तो आप जब सर्च करोगे तो वो एआई क्या करेगा कि उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और अपने डेटा में वो एनालाइज करेगा और सब कुछ रिटर्न आउटपुट देगा, और वो आउटपुट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो चैट जीपीटी क्या करता है ना, वो डेटा को इनपुट एज इनपुट लेता है, उसके पास पहले से वो डेटा होता है, उस डेटा पे एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, देन इट रिटर्न सम आउटपुट। मतलब सर उसके पास गूगल से भी बड़ा डेटाबेस ऑलरेडी है क्या सर? देखो डेटा बेस नहीं होता है, आप कचड़ा भर के क्या करोगे? तुम्हारे पास बहुत बड़ा बक्सा ही रहा है, उसमें कचड़ा भर लो, और कोई आके बगल वाले बक्से में 10 केजी सोना रख ले, तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट सोना होगा ना, बक्सा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो एल्गोरिदम्स जो एआई के एल्गोरिदम्स लगे हैं ना, वो बहुत पावरफुल है, बट इट नॉट अफेक्ट्स दी एनी, लाइक आप लोग पढ़ते होंगे कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की लाइफ को काफी प्रॉब्लमेटिक कर देगा ये चैट जीपीटी, बट इट नॉट लाइक दैट। ये ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। रीजन बिहाइंड कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर समथिंग जो कि आप यूजर के किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। मान लो एक सिविल इंजीनियर है और वो बोलोगे कि मुझे घर में 4 खिड़की चाहिए और एक ना छत के बीच में भी खिड़की चाहिए, तो वो सिविल इंजीनियर क्या करेगा? वो खिड़की बना डिजाइन कर देगा। बट एआई को आप बोलोगे कि मेरे पास 4 खिड़की, अगर उसके पास पहले से डेटा होगा वो तो 4 खिड़की बना के दे देगा, बट बोलोगे नहीं मेरे को बीच में भी एक खिड़की चाहिए, तो क्या वो एआई कर पाएगा? क्योंकि वो डेटा उसके पास नहीं है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कभी भी कम नहीं हो सकते, क्योंकि रीजन बेहिंड कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के हाथ में कंट्रोल है, वो क्योंकि वो मैनुअली हर कुछ डेवलप कर सकते हैं, जो कि चैट जीपीटी नहीं कर सकता। वो वही कर सकता है जो उसके अंदर है, पहले से अवेलेबल है। कुल मिला के सॉफ्टवेयर डेवलपर सोच सकते हैं, इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं। यस देखो, मैं मतलब देयर आर मल्टीपल फील्ड्स जहाँ पे बहुत पैसे हैं। आई डोंट नो कि बहुत सारे फील्ड्स होंगे, बट एज माय पर्सनल पर्सपेक्टिव कि इफ यू आर सीरियसली वर्किंग हार्ड, और अगर आप दिल से प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना और टाइम दे रहे हो प्रोग्रामिंग करने को, तो फिर क्या होगा कि आने वाले जो टाइम है ना 5 to 10 years, ये फिर वैसा ही रहने वाला है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेंड था ना पहले की गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल,
हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि हाँ। आपकी सोसाइटी वाले ने ये देखा है ना कि जो गवर्नमेंट जॉब वाला है, उसने अपनी लाइफ में अच्छे से जिया हुआ है, जीता है। जी सर। हाँ। वो क्या करते Yes, हैं कि आपके घर वालों का एक प्रेशर होता है कि सामने वाला बैंक में है, तो दे विल डू गुड, तो आप भी कुछ ऐसा करो कि आपकी भी जिंदगी सुकून से हो जाए, सुकून से कटे, है ना। तो अब क्या है ना कि आने वाले 5 और 10 इयर्स में सब कुछ होने वाला है डेटा। इट्स लाइक एवरी वॉर इज बिहाइंड डेटा। हर चीज डेटा के पीछे चल रहा होगा। ये नहीं हो रहा होगा कि आप आए तोप से लड़ाई लड़ लिए, हर चीज डेटा के पीछे चल रहा होगा। तो आने वाले 5-10 इयर्स में लाइक रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट, कोडिंग इज लाइक ऑल थिंग, यही सब कुछ होगा। तो इस सर इतना सर या एंड सर नेटवर्क डाटाबेस सॉरी बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन टॉपिक से थोड़ा हटके है। हाँ हेलो या यस विपिन, जल्दी बताओ। या सर, जो सर ऑडियो योनो होता है सर, उसे किस किस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम कर सकते हैं? भाई मेरे को आइडिया नहीं है आरडीओ, व्हाट इज आरडीओ? आर्डिनो की लैंग्वेजेस अलग होती हैं, उसकी बैरी है और भी उसकी लैंग्वेजेस तो अलग ही है, वो तो आईओटी वाली लैंग्वेजेस है ना। बस पूछना चाह रहे थे। Sorry, Vipin, I don't know. I have not worked on such languages, so I have no idea. Okay. So the actually वही चीज है कि तो आने वाले जो टाइम है next 5 year or 10 years, everything is just moving around data. हर जगह डेटा का गेम चल रहा होगा, डेटा मैनिपुलेशंस का गेम चल रहा होगा। तो इसमें क्या होगा कि इफ यू आर अ टेक्निकल गाय, तो आप फिर लाइफ में सर्वाइव कर पाओगे और अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। इफ यू आर नॉट टेक्निकल बैकग्राउंड, तो फिर क्या होगा कि आप बस एक एग्जांपल दे रहे होगे कि अगर मैं ये कर लेता तो आज मैं ये होता, अगर मैं आज ये नहीं हूं तो मैंने ये नहीं करा। तो बहुत ये गवर्नमेंट जॉब वाला फेज में ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ, तो वहां से बहुत मुश्किल से बाहर निकला है। एग्जैक्टली। और मेरे लिए मेरा एक ही कंसर्न है कि इफ यू गिव समथिंग लाइक 5 to 6 years ऑन गवर्नमेंट प्रिपरेशन, लास्टली अगर आपको कुछ नहीं, आप भगवान ने नहीं करा कुछ और जॉब नहीं मिलती है, तो वो 6 साल की प्रिपरेशन का आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाते। I spent 4 years myself. या मैं समझ सकता हूँ ये भावना कि उस 4 साल के प्रिपरेशन में आपने बहुत कुछ सीखा है, बट वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं यूजफुल तो नहीं है ना, वो आपको पैसे तो नहीं कमा के दे रहा है ना। Yes sir, yes sir. तो और दैट्स वाई कि अगर आप वही काम 4 साल टेक्निकल फील्ड में किए होते, तो फिर आपको 4 साल बाद वो रिटर्न से मिल रहा होता ना, तो वो फिर कंपाउंडली रिटर्न आपको आ रहा होता, आपके पास पैसे आ रहे होते। तो फिर वो आउटपुट का मजा है जिसमें पैसे हैं। भाई सीधी सी बात है, पैसा कमाने बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। विदाउट पैसा कुछ नहीं है। तो सर पेरेंट्स इतने टेक्निकल नहीं ना, तो वो समझते नहीं ना ये बातें। तो ये चीज वही है ना कि ओवरऑल जब बाद में पैसे कमा के ले जाओगे ना घर पे, तो घर वाले भी समझने लगेंगे। सर मेरी जॉब कंप्यूटर की वजह से ही लगी हुई है, क्योंकि क्लास 10 से हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और मैं कंप्यूटर में काफी चीजें सीखी हैं, जॉब हमें बहुत इजीली मिल जाती हैं, कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो। या तो यही है कि अब इसमें भी है कि आपके पास अगर टेक्निकल नॉलेज है, तो क्या है कि अब ये सारी, ये जो मैं अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं पढ़ सकते, और जो सब पढ़ सकते हैं वो हम नहीं पढ़ सकते, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसी चीजें हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर ये आपको आ गई तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर लोगे। और ये कोई एकदम से आके सीधा आके 10 दिन में कोई कहेगा कि आई एम जस्ट गोइंग टू बी अ कोडर और मैं डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया हूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो बिकॉज इट इज टफ, दैट्स व्हाई इट गिव्स यू अ रिटर्न। ठीक है ना, ये टफ है तभी रिटर्न मिल रहा है। अगर ये भी वही काम होता है कि आप जस्ट लाइक 2 दिन में काम कंप्लीट कर लिए होते, तो आपको फिर कोई रिटर्न क्यों देगा, वो खुद नहीं कर लेगा बैठ के। कोई मान लो एज अ क्लाइंट, फॉरेन क्लाइंट तुमको $15 या $20 पर आवर दे रहा है, इट मीन्स वो 1600 रुपए घंटे का दे रहा है, 1500 रुपए घंटे का दे रहा है। अगर दिन में काम कर रहे हो, तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा है, तो 10,000 इज मोर देन एनफ ना फॉर वन डे। तो वो 10,000 अगर आप हवा के लिए दे देगा कि जस्ट लाइक आपको जस्ट एक गिलास पानी लाना है, वो क्यों देगा? फिर वो तो खुद ले लेगा ना एक गिलास पानी। तो आई एम जस्ट टेलिंग कि व्हाई कोडिंग इज इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा बीच में ना एनर्जी होना चाहिए कि फिर वो जो थोड़ा सो रहे होंगे ना, उनके लिए अंदर से एक बूस्ट आएगा कि आई हैव टू डू समथिंग बेटर इन माय लाइफ, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं फिर। तो अभी फंक्शन समझ में आया है आप लोगों को? Yes Yes, sir. Yes, तो sir.
अभी बहुत सारी चीजें हम प्रोग्राम्स लिखेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे यार. A lot of things to cover. Don't worry, we will cover each and everything. अगर अच्छे से पढ़ोगे सब तो इतना तो गारंटी है कि इंटरव्यू में जाओगे ना, सो के जाना, जो पूछे आंसर दे के आओगे सब. सर और एक क्वेश्चन था इंटरव्यू के हिसाब से. यस भाई बताइए. अब इंटरव्यू में एक टेक्निकल राउंड कैसा रहता है ना सर, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहता है सर, वो भी सिखा देंगे क्या आप? यही सब तो पूछते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और अब जो आगे पढ़ेंगे वो भी पूछते हैं. नहीं सर, वो नहीं, वो कुछ मैथ्स का इक्वेशन वो जो पूछा जाता है ना, वो नहीं रहता है? अरे वो एप्टीट्यूड वाला टेस्ट वो भीड़ वाले कंपनी में होता है, जहाँ पे अब बैल और भैंस जाते हैं ना, वहां से वो बस छांटने के लिए वो एप्टीट्यूड का टेस्ट लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब. यस. माने तो आप बड़ी कंपनी में नहीं रहते क्या सर वो टेस्ट? एप्टीट्यूड नहीं लेता है कोई एप्टीट्यूड, क्योंकि अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हो ना, कोडिंग की स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हो, तो वो उसकी एप्टीट्यूड से उसको कोई मतलब नहीं है. वो उस कंपनी में है कि आपको भी नहीं पता है क्या काम करना है, उनको भी नहीं पता है क्या काम करवाना है, तो पहले एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो इनका, और इनको छांट दो. जो आधे से ज्यादा बैल भैंस है इनको निकाल दो, जो बचेंगे उनमें से डिसाइड कर लेंगे किनको लेना है. सर अब अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि एक ही राउंड रहता है क्या सर? आप नहीं, एक राउंड डेफिनेटली एक राउंड नहीं होता है भाई, इतना भी आसान नहीं है. दे हैव लाइक 3 or 4 राउंड्स, और दे ऑल राउंड्स आर टेक्निकल. आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपसे जेएस क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपके रिएक्ट का टेस्ट लेंगे, वो आपसे कुछ बिल्ड करवाएंगे, बनवाएंगे, कुछ टास्क देंगे, सामने लाइव कोडिंग करवाएंगे. तो दे आर लाइक समथिंग जो कि आप सीख रहे होगे. और एप्टीट्यूड इट इज लाइक कि वो फिर वो हो गया ना कि मान लो कहीं पे 200 लोग पहुंच गए और उनमें से 120 लोगों को हटाना है, तो क्या करेंगे? सबका तो इंटरव्यू नहीं लेंगे ना, तो वहां पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेते हैं, वहां पे आपके जीडी टेस्ट ले लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा के आप लोगों में से हटा देंगे. क्या आधा जनता को भगाओ तो आधी जनता में कर लो. When you are just going for technical interviews, then they ask only such things जो कि आप अपने रिज्यूमे में मेंशन किए हुए हो. They are not going beyond your resume. ठीक है सर. सर हम लोग का रिज्यूमे मतलब बनवाना भी बताएंगे आप? नहीं मैं सब चीज मेरे से करवा लो भाई. नहीं सर, आप बट टेक्निकल के लिए कैसा होना चाहिए वो वो थोड़ा ऑब्वियसली आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्लेसमेंट सेल है वो सब कुछ हैंडल करेंगे आपके रिज्यूम एंड ऑल. बिकॉज ना वहाँ पर मेंशन था कि प्रोफाइल बिल्डिंग भी मैं यहाँ पर वो प्लेसमेंट सेल वाले करवाएंगे जो. ओके भाई मेरे से अब रिज्यूमे भी बिल्ड करवाओ सब बैठ के. जॉब भी सर आप ही दे देना. भाई सर आप पढ़ा इतना अच्छा रहे हो तो सब कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे ही हो रही है. सर हम आपकी टीम में आना चाहेंगे. यस ऑफ कोर्स. ओके, आपको कंपनी खोल लेनी चाहिए. मैं स्टार्टअप फॉरेन कंपनी से आपको खुद को कर लेना चाहिए. यस यार प्लान तो है, बट आने वाले टाइम के बाद है, कुछ टाइम के बाद है. सर ये कोर्स का सिलेबस है सर मेटावर्स के अंदर कर सकते हो क्योंकि अभी उसका खूब हाइप है. फेसबुक बहुत हायर कर रहा है उसके रिगार्डिंग. सॉरी, तो मेटावर्स के अंदर कर सकते हो. अभी उसके अंदर फेसबुक ने खूब हायर किया है, खूब लोगों को हायर किया है फेसबुक ने. देखो बहुत वर्क्स हैं यार, काम इतना है ना कि काम की कमी ही नहीं है. यस काम सर. करने वाले होने चाहिए और काम करवाने वाला होना चाहिए, बस इतना ही है. काम करवाने वाला सही होना चाहिए और काम करने वाला सही होना चाहिए. Yes. So if you have skills, so we can survive anywhere in this world. Or if you survive in Indian market, then you will survive in any corner of the world. आप कहीं भी पैसे बना सकते हो अगर आप इंडिया में पैसे बनाना जानते हो तो. Yes sir. तो इंडिया का मार्केट बनियों का मार्केट है भाई, पैसा देते नहीं है जल्दी. तो जब इंडिया में पैसे कमाना जान गया ना तो कहीं पे भी कमा लोगे. एग्जैक्टली. सर ये कोर्स का पूरा सिलेबस आप ही सिखाएंगे सर? सॉरी, ये कोर्स का पूरा सिलेबस आप ही पढ़ाएंगे? यस, बैकएंड नोड.जेएस तो डेफिनेटली मैं ही पढ़ाऊंगा. नोड.जेएस और मोंगोडीबी और रिएक्ट, मतलब फुल स्टैक मैं ही कराऊंगा. ओके सर. ठीक है सर. सर इस कोर्स में सॉरी डीएसए कुछ पढ़ाते क्या सर? डाटा स्ट्रक्चर. देखो जब हम when we are talking about arrays and objects, then we will handle some programming
like algorithms, like how to deal with arrays and objects. तो वहाँ पे हम थोड़ा सा DSA कवर करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स जानेंगे. और डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव, फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव, वी ओनली हैव अ गुड नॉलेज ऑन एरे एंड ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर. मतलब अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरे एंड ऑब्जेक्ट्स है. There are multiple data structures, like we have a trees, we have a graphs, we have a linked list. बहुत सारे सर, हैं. हाँ सर, मेरे को एक डाउट अभी तक यही ध्यान में है सर. मैं अभी C++ पढ़ा था मेरा PUC में. उधर मैं एरेस, कॉलम, स्टेटमेंट्स सब पढ़ा हूँ. वो सब कोडिंग लैंग्वेज में एक ही रहता है क्या सर, और चेंज होता है? देखो, बस वे ऑफ राइटिंग द कोड इज डिफरेंट, बट योर अप्रोच इज सेम. ओके सर. सर हम लोग को डायनेमिक वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे ना? तो ऑब्वियसली रिएक्ट तो डेफिनेटली डायनामिक वेबसाइट्स के लिए होता है. फंक्शनैलिटी आप प्रोवाइड करो, देयर डायनामिक वेबसाइट्स. ओके, जैसे यूजर से हमने कुछ इनपुट करवाया और वो भी जाकर के सर्वर पे ही स्टोर होगा और वेबसाइट पे दिखे. एग्जैक्टली, मतलब जो लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी डायनामिकली फंक्शनैलिटीज हैंडल होते हैं ना, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे. डोंट वरी. देखो, ओवरऑल फंक्शनैलिटीज ही हैंडल करना एक प्रोग्रामर का काम होता है. डिजाइनिंग के लिए दे प्रोवाइड यू जस्ट लाइक स्केच फाइल और PSD फाइल और समथिंग लाइक व्हाट क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है. इट इज नहीं मिस कर रहा हूँ. इलस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं, और है बहुत. सर फिग्मा. वर्डप्रेस. फिग्मा. तो बेसिकली क्लाइंट्स आपको फिग्मा डिजाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो डिजाइनिंग का भसड़ ज्यादा में लेना नहीं होता है. वो जो डिजाइन लेंगे वो डिजाइन सीधा सीधी उतार देते हैं, है ना. तो मेन होती है फंक्शनैलिटी. यहाँ पे एज अ डेवलपर आपके लिए चैलेंजेस आते हैं फंक्शनैलिटीज में. मतलब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे काम करोगे, नोड पे काम करोगे, तो ये प्रैक्टिसेस होंगे, अच्छे से होंगे. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. प्रतीक. सर. भावेश गंगीड़. प्रेजेंट सर. अमन कुमार सिंह. अमन कुमार सिंह. अमन कुमार सिंह. ओके. विनय प्रताप सिंह. प्रेजेंट सर. सागर मदोक. यस सर, प्रेजेंट सर. वराज संतोष कड़ाने. प्रेजेंट सर. कल नहीं आए थे वराज? कल सर मैं थोड़ा मतलब मैं बीच में थोड़ा बाहर गया था, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया सर. ओके. कोमल तिवारी. प्रेजेंट सर. कोमल कल नहीं आई थी आप? नो सर, मेरा फोन खराब हो गया था सर. ओके. कुमारजीत. यस सर. चंदन कुमार. यस सर. हिमांशी पराशर. प्रेजेंट सर. दुपाती पढ़ना. भावना वरघाने. प्रेजेंट सर. फूलमाला विश्वास. साक्षी देशमुख. जयकिशन पांडे. अफजल अकबर शाह. अफजल अकबर शाह. प्रकाश दास. यस सर. वैष्णवी रावल. आयुष शाह. सुजॉय डोलोय. यार इसका नाम क्या है? डोलुई, DOLUI क्या बोलते हैं भाई? DOL. ओके. रामधारी रविदास. गौरव सिंह. सूर्यनाथ सिंह राजपूत. सौरभ सिंह. निखिल त्यागी. असफ अनवर. असफ अनवर. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. आशीष रॉय. यस सर. आशीष कल नहीं थे ना आप? नहीं सर, था. ओके. मैंने दोबारा रेसेंड किया था सर, तो आपने बोला कि अटेंडेंस हो चुका है आपका. ओके. ओके. हाँ हाँ ठीक. हाँ ठीक है. केशव. प्रेजेंट सर. विजयराज सिंह. विजयराज सिंह. विजयराज सिंह.
गनप्रिया कस्बे, गनप्रिया कस्बे, आशुतोष सिंह, यस सर। शांतनु रस्तोगी, Yes, sir, I'm present. राहुल नेमीचंद शर्मा, बंदेसी रामत, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साली, संतोष तिवारी, राहुल गेजवल, प्रेजेंट सर। आशुतोष गुप्ता, प्रेजेंट सर। निखिल रड़कर, प्रेजेंट सर। दिनेश कुमार सैनी, विद्या सुरकर, प्रेजेंट सर। अथांग, कुणाल सिंह राजपूत, प्रेजेंट सर। निमिष शर्मा, यस सर, प्रेजेंट सर। सोनम चौधरी। हेलो जी, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। सोनम चौधरी, सत्यजीत पांडा, विपिन कुमार, प्रेजेंट सर। रंजीत रॉय चौधरी, प्रेजेंट सर। प्रकाश बोटे, प्रीतम जाना, गोविंद राजपूत, आयुष कुमार शाह, आशुतोष गुप्ता। ओके, किसी का अटेंडेंस जो रुका नहीं हुआ है? हेलो यस सर, अमित पंचल। जी सर। कुमार। राइस कुमार शाह। आयुष कुमार, तुम प्रेजेंट हो? मैंने अटेंडेंस बोल दिया भाई। आशुतोष गुप्ता, अमन कुमार। आयुष कुमार लग गई यार अटेंडेंस भाई। सर अमित पांचाल। आशुतोष गुप्ता। एक सेकंड, ठीक है। अमित पंचल, अमन कुमार। अमन कुमार कौन? अमन कुमार मैंने अटेंडेंस करनी हुआ है, एक बार बता देना फिर से भाई। क्या कौन कौन जिनका अटेंडेंस नहीं हुआ है अभी? अमित पंचल मैं नोट कर रहा हूँ। जी सर। बस सर, ये पिछली 2 क्लासेज लगी हुई है, उनके नोट्स किसके पास होंगे सर? पिछली क्लास के नोट्स नहीं थे आई थिंक अभी तक। इन क्लासेस में नोट्स नहीं, बूटस्ट्रैप तक मैंने नोट्स प्रोवाइड किया हुआ था। अभी तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो देखिए रिपीटिवली, वीडियो देखिए। एक बार नाम बताना। अमित पांचाल सर। अमन कुमार। सर यस, ये नोट्स कहाँ प्रोवाइड मिलते हैं सर? हाँ जी, यस, हु इज दिस? राहुल गेजवाल सर। ये राहुल, बताओ। जी, नोट्स कहाँ प्रोवाइड करवा रखे हैं जी इस पे? यार इन 2 लेक्चर्स के लिए वी हैवंट प्रोवाइड एनी नोट्स, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो जो चीजें लेक्चर्स में हो रहे हैं इनको रिपीटिवली देखना, जो समझ में नहीं आप पूछ सकते हो। जब ऐसे और इससे पहले वाले नोट्स? यस, इवन इन ग्रुप लाइक कौन शेयर कर सकता है, आप किसी से मांग सकते हो प्रॉब्लम्स वाले ग्रुप में। अच्छा जी, और आपने कोई असाइनमेंट दी है अभी तक बनाने के लिए? मैंने बूटस्ट्रैप पे दिया हुआ था, एक लैंडिंग पेज बनाना था, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट लोगों को बिल्ड करना था, तो अच्छा जी। आप पूछ लेना ग्रुप में। कोई भी प्रॉब्लम ऐसे हो ना असाइनमेंट से रिलेटेड एंड ऑल, तो ये आप ग्रुप में शेयर कर दोगे तो मेरे टाइम होगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, वन मोर थिंग, जो
आप लोगों का ये है क्या बोलते हैं ना, जो ट्यूटर हैं जो प्रॉब्लम्स लेते हैं, तो इज इट ओके ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों नहीं यस सर हम नहीं सर सर, नहीं हो रहे। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। ज्वाइन करना बट ज्वाइन नहीं हो रही। तो मेरे तो हो रहे हैं। ओके भी हो रहे हैं सर हम अगर कुछ पूछ रहे हैं ना, जैसे कि आपने कहा था बूटस्ट्रैप के साथ मतलब अपना खुद का सीएसएस लगा के कुछ करो, सो हम पूछते हैं तो मतलब उन्होंने तो कहा कि मतलब बूट्स या तो सिर्फ बूटस्ट्रैप यूज करो या फिर सीएसएस यूज करो, दोनों यूज करोगे तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, ये चीज तो मुझे भी बोली थी कि बूटस्ट्रैप के लिए अगर आपको एडिट करना हो तो फिर बूटस्ट्रैप में जाकर साइट पे जाकर उसके सारे वो वेरिएबल्स वगैरह देखने पड़ेंगे। यस सर, मुझे भी पहली क्लास में बोले थे, इसलिए आपको पूछा मैं व्हाट्सएप पे। मेरे से सर ज्वाइन ही नहीं होता है, हमने 2-3 बार ट्राई किया है लिंक के थ्रू, बट कभी जो है क्लास में इन ही नहीं करते हैं। पैसे वैसे लियो क्या उनसे? बट यस, बट नॉट लाइक दैट। आप लोग बूटस्ट्रैप के साथ कस्टम सीएसएस यूज कर सकते हो, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, सो डोंट वरी। सर हमने तो यूज किया है। Good practice, so don't worry. Yeah. So let's something which is not covered yet. So yeah. Sorry. उमर बाबू बंद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। Okay. So now on tomorrow we are just going to cover our first data structure, which is array. It is a very powerful data structure, and object and arrays are something. ये कौन unmute है? भेज दीजिएगा। कौन सारा लिया हो तो तन देख भाई मौसफ यार, ठीक है। तो yes, so tomorrow we will cover our first JavaScript data structures, which is basically array and object. So we will talk about arrays, how to deal with arrays, how to make some operations on arrays, and what is array, what is the benefit of using array. Or array no objects are something which you like face on daily basis. On daily programs you will face array or object. So these are the most powerful data structures. So हम नेक्स्ट डे इसको कवर करेंगे, सो डोंट वरी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बस देख लेता हूँ कि कुछ जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस में बचा है कि नहीं बचा है। ओके, सो यस, देयर इज समथिंग जो कि आई एम गोइंग टू कवर, multiply. Yes, okay, so I'm just going to write one program. Okay, तो आप लोग ये समझ में आ गया कि if you want to add some numbers, then you can make a one program, one function to add two numbers. If you want to multiply, then you can create your own function. If you want to divide, then you can create your own function. तो as आपकी requirement के हिसाब से you can build your own functions. Yes, so now I'm just going to make something like this. I want a function. I have one challenge. I have some requirement. I want. आपको दिख रहा है screen? Hello? Is it visible? Yes sir. हाँ सर। Yeah. Yes, So sir. I want some program. Yeah, I want one function which what? Actually, which takes two inputs as an argument, and if both the inputs are greater than or like greater than 30, then print. Then what? Print. Then something like this. Yeah. Then print inputs are
acceptable, acceptable, ठीक है. If one input is greater than 30, then print make another input, make if one is greater than 30, then print what? Please enter, please give both inputs, which is what? Greater than 30. And if both inputs are smaller than 30, then print what? Print invalid user values. So I have written something. What is this? I want one function which takes two inputs as an arguments or as a parameter, and if both the inputs are greater than 30, then print inputs are acceptable. Second case is that if one input is greater than 30, then print please give both input which is greater than 30, this message. And if both inputs are smaller than 30, then print invalid user values. तो अब आपके लिए क्या होगा कि जब आप इसको लिखोगे तो यू हैव टू डू व्हाट, आप क्या करना है, आप क्या कर सकते हो कि यू कैन मेक अ मल्टीपल लाइंस. लाइक आप क्या करोगे कि बार बार इनपुट लोगे, फिर आप कोड लिखोगे. तो वी कैन मेक अ सिंगल फंक्शन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ फंक्शन. देखना, आई एम गोइंग टू मेक वन फंक्शन which name is check input, and it takes two inputs as an argument. या यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं बोल सकते हो क्योंकि डेफिनेशन लिख रहे हो, तो पैरामीटर लिखो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कब पास करते हो? व्हेन यू कॉल द फंक्शन. तो फंक्शन पैरामीटर में आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स. This is your function definition, and now in function definition I am going to make these conditions. So I'm just going to write to match our first condition, which is what? If both the inputs are greater than 30. So I'm just going to give if E is greater than 30, both the inputs, दोनों inputs क्या होना चाहिए? 30 से बड़े होने चाहिए. तो यहाँ कौन सा ऑपरेटर लगेगा? Which operator we can use? And or operator? And operator, sir. And operator. And B is greater than 30, then simply I'm just going to console.log, because console.log helps me to give the values. Because अभी हम जब आगे बातें करेंगे वहां पे हम रिटर्न कराएंगे. ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फंक्शन जो कि हम आगे अभी जस्ट बात करेंगे. Okay, let's do just after this work. I'm just going to give very important part जो कि मैं कल भी एक बार बता दूंगा. तो यहाँ एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि any function have to return something. Otherwise, if you not return something from the function, then it shows what? Undefined. What it means? इस वाले को भूल जाओ, इस वाले टास्क को भूल जाओ, अभी यहाँ कंसंट्रेट करना. Any function have to return something. Otherwise, if you not return something from the function, then it what? Then it gives us undefined. What it means? अब यहाँ समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा.
I'm just going to write a function which is a add function. Function add, या आप बोल दो multiply numbers. Multiply number, and it takes 2 arguments and it returns. Okay, now I'm just going to what? Where result, which stores A into B value, right? Okay, now I'm going to console dot log result. Okay, सब कुछ बंद है, ठीक है. अब समझता हूं. When you call this function multiply number and pass 2 arguments 3 and 4. Okay, when you call this function 3 a is equals to 3 and b is equals to 4, then a into b is 12, result is equals to 12. So console.log 12 is result is equals to what? 12. I'm just going to go on our browser and it returns what? 12. Okay. The point is that we are using here console.log, and console.log is a predefined JavaScript function which returns the output in the what? In the browser. तो ये ब्राउजर पे आपको कुछ दे रहा है, बट फंक्शन का मेन काम क्या होता है, एक मैं जस्ट आपको बता रहा हूं यहाँ पे, समझना ध्यान से, कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, मतलब ये जब फंक्शन रन कर जाएगा तो इट रिटर्न समथिंग, जो कि हमें उस फंक्शन को क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है. मान लो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस console.log फ्रॉम हियर. देखो console.log is only for checking your data on your console browser, on that part. You can't handle this data on your web page with the help of console.log. console.log सिर्फ आपकी console पे आपके डेटा को दिखाता है. तो what if I'm just calling this function and I'm not going to return something from there? So when I refresh the page, if you want to call multiply number from here, multiply number and pass 3,4 as an argument, it shows undefined. Why it is happening? Because our function is not returning anything from here. So we have to return something. So we use return keyword here. Return means कि if it performs your task, then return something which is what? A output. So here output is what? A result. यही result output है ना. तो अब क्या होगा कि जब multiply number, when you call the multiply number and give some what arguments, it takes as a parameter, and it have some operations, it have some task, it performs their task, and then after we have 2 options. First is console.log, which is only for checking your data on console browser. But this is not what we have to achieve. We have to achieve something from the multiply number. When it calls, it have to return something. So in this case, we have to return what? A result, which is A into B. So when I call multiply number now, see, like this, I'm just going to copy, paste it, okay, return result, and now I have to what? console.log. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, डोंट वरी. Okay, I'm just going to now copy multiply number. It is correct, which it means, okay, multiply number, and I'm going to give 3,4. Just give me it is undefined. What we have to do here, function return result, and now it returns something. Okay, I'm just going to paste this function here.
So this is some function, and if I call multiply number with 3, 4 and argument, 3 and 4, then it returns 12. अब देखना, यहां समझना, क्योंकि एक्चुअली यहां से तो ये टर्मिनेट हो जा रहा था, तो ये रिटर्न नहीं कर रहा था बाय मिस्टेकली. तो लाइक इफ यू डिफाइन फंक्शन हियर, then multiply number return something which is what a result. For example, अगर मैं सेम फंक्शन को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ शिफ्ट में, सॉरी यहाँ पे है ना, ओके, मैं पेस्ट करता हूँ और मैं ये रिटर्न रिजल्ट वाली लाइन को हटा देता हूँ. Now when you call this function multiply number and passes to argument 3, 4, then it just returns undefined, because यहाँ आपने a into b को result में तो store किया. You will store the value of a into b into result, but you don't return anything from the function. So our work is that we have to return something from the function, which is what? Our value. So in function we have to return something, otherwise it gives what? Undefined. तो एक नॉर्मल मैं डायग्राम से आप लोगों को समझा देता हूं कि होता क्या है बेसिकली, ध्यान से समझना. I'm just going to create one MS Word. I'm not proficient in using MS Word. Just like this. Okay, like this. If you have something input, okay, you pass this input like a comma b, then we have our function definition which takes this argument a and b, right, and perform some action. After performing of action, it have basically two things. What is this? I'm just going to draw something. First is it performs an action, and we can return with the help of what? Console.log from here, right? Console.log. Okay. Now we have two things here. What is this? Where we can use our, where's pencil here? भाई पेंसिल क्या कहाँ है इसमें? ओके, पेंसिल मुझे कहीं दिख रहा था बट अब नहीं. सर इंसर्ट में जाके आएगा पेंसिल. ओके, where's this is ड्रॉ ऑप्शन में, ड्रॉ में. ओके, ड्रॉ में मैं क्या करूं? पेंसिल ले लूं. Okay, now I can type now. Yeah. So when you give some input, when you call any function, then this function perform action, and after action has been performed, you can console.log its value. But when its function perform actions, then it have two options. Firstly, if you're not returning something, then it gives you undefined. And if you return something from the function, अगर आप रिटर्न करते हो तो क्या होगा? आप रिटर्न कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है फंक्शन में. व्हेन यू रिटर्न, देन इट रिटर्न्स व्हाट? इट्स वैल्यू और इट्स रिजल्ट. इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? नो सर. तो मैं क्या बोल रहा था, सिंपली यही समझना है कि when you write any function, then make sure that you have to return something from the function, otherwise it returns nothing. Like आपका काम तो हो जाएगा, just for example कि मैंने कोई काम किसी को दिया और वो काम आपने कर भी लिया, वो काम आपने क्या किया? कर लिया. बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपने काम तो कर लिया, बट
आपने वो काम करने के बाद वो रिजल्ट आपने वो मुझे मिला ही नहीं, तो उसका काम क्या हुआ? कोई काम नहीं हुआ ना। मैंने आपको कोई काम दिया, आपने वो काम भी कर लिया, बट आपने वो काम मुझे दिखाया ही नहीं, तो वो फिर मतलब नहीं बना। तो दैट इज द मेन आप ऐसे समझ सकते हो कि फंक्शन क्या करता है कि आफ्टर ऑपरेशन, after performing task, it have to return something from the function. If you are not using this return keyword, then function is returning nothing from here. It performs an action, but it returns nothing from here. So सर एक डाउट था, जो आपने रिटर्न रिजल्ट लिखा था ना, उसके आगे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे ना? रिजल्ट के आगे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे ना? रिटर्न के आगे किस साइड में? नहीं, रिजल्ट के आगे यहाँ पे ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। ये जो नहीं, ये जो रिटर्न के आगे रिजल्ट लिखा है ना वर्ड, या उसके आगे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे ना कॉल करने के लिए? नहीं, रिजल्ट इज नथिंग, रिजल्ट इज ओनली अ वेरिएबल ना, इट इज नॉट अ फंक्शन. It is a value variable which stores the some value. It is not a function कि you have to call this function from here. और ये तब यूज करते हो जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो. When you call any function, then you use like something like this, multiply number and pass some argument like 3,4. क्लियर है? सर हम जब कुछ टाइम पहले जो मतलब हम कर रहे थे ना, वो रिटर्न की जगह कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे, तो वो भी क्या रिटर्न की तरह ही मतलब काम करता है? यस, एक्चुअली वो क्या करता है कि जो डेटा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो डेटा आपको आपके ब्राउजर में शो करके दिखा देता है कि क्या आप ये डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने फंक्शन से. तो आप एक बार मैच कर लेते हो. इफ योर कंसोल इज वर्किंग फाइन, अगर आपका कंसोल सही काम कर रहा होता है, यहाँ पे आप जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट किया, जस्ट फॉर एग्जांपल देखो प्रैक्टिस क्या होता है. मैं पहले करूंगा कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि क्या मैं जो इनपुट हमने प्रोवाइड किया है क्या ये एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है ये फंक्शन. तो आई एम जस्ट कॉलिंग फ्रॉम हियर लाइक व्हाट, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग द पेज एंड मल्टीप्लाई 3.4. ये काम नहीं कर रहा है क्या? अच्छा, स्क्रिप्ट तो हमारा वहां है ना. वेयर इज आवर स्क्रिप्ट? आवर स्क्रिप्ट इज हियर, राइट? सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश एंड इट गिव्स यू रिटर्न रिजल्ट 12. तो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर फंक्शन. बट ये जो कंसोल लगाते हैं, इट ओनली गिव्स यू आउटपुट ऑन कंसोल ब्राउजर. इट डोंट, आवर फंक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड विदाउट रिटर्न. तो आप बस अपने वैल्यू को चेक कर लिए विद कंसोल की हेल्प से कि यस आवर फंक्शन इज रेडी टू यूज. अगर ये वैल्यू सही आ रहा है, देन वी सिंपली रिमूव आवर कंसोल एंड रिटर्न रिजल्ट फ्रॉम हियर. तो क्या होगा कि आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा. अदरवाइज ये क्या होगा कि आपको अनडिफाइंड देगा. आपको कंसोल का मतलब समझ में आया ना? कंसोल इज ओनली यूज्ड टू चेक योर वैल्यू ऑन द ब्राउजर. इज इट वैल्यू इज coming as expected or not? And if it is on our if it is correct, then we have to just return the value from that function. Is it clear? Yes sir. यस सर. तो सिंपली क्या होता है ना कि एक सिंपल वर्ड में बताऊं कि जैसे फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, व्हेन आवर फंक्शन रिटर्न्स समथिंग, देन दिस फंक्शन इज रिमूव्ड. मतलब अब इस फंक्शन का काम हो गया, मतलब इसने अगर कुछ रिटर्न कर दिया, इट मींस दैट कि ये फंक्शन अपना काम कर लिया और अब ये जाके फ्री होके बैठ गया. जब तक आप उसको फिर दोबारा कॉल नहीं करोगे, जब तक आप उसको दोबारा कॉल नहीं करोगे, अगर आपने एक बार कॉल किया फंक्शन को, उसने अपने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, व्हेन इट रिटर्न्स द रिजल्ट, देन वो फंक्शन का अपना काम खत्म हो गया, वो फिर जाके बैठ जाएगा. फिर आप कहीं और से फिर दोबारा उसको कॉल करोगे, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, फिर वो रिटर्न करेगा, फिर वो काम उसका खत्म हो जाएगा. अदरवाइज इफ यू नॉट रिटर्न समथिंग फ्रॉम फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि आप फंक्शन को खड़े करके खड़ी किए हो. आपने किसी से पानी मांगा और वो पानी लेके आपके पास आया, वो खड़ा है. जब तक आप पानी उससे लोगे नहीं, तब तक तो वो फिर फ्री नहीं हुआ ना. इज नॉट फ्री. समझ रहे हो? तो आपने फंक्शन को कोई काम कह दिया कि प्लीज परफॉर्म दिस टास्क, और यू डोंट रिसीव एनी रिटर्न फ्रॉम हिम, रिटर्न फ्रॉम फंक्शन. इट मींस व्हाट कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन बंद ही नहीं हुआ, वो चुपचाप खड़ा है पानी लेके कि प्लीज पानी ले लो फिर मैं फ्री हो जाऊं. इज इट क्लियर?
Yes, sir. एंड console.log is something like that कि वो पानी में जहर तो नहीं मिला है ना, वो चेक करना। तो मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि भाई प्लीज चेक करो कि पानी में जहर तो नहीं मिला है, तो वो चेक कर लिया कि भाई पानी में जहर नहीं है, इट इज ओके, तो यस प्लीज रीड दो, अब दो, मैं पानी पी लेता हूँ। इट इज समथिंग लाइक दैट। अभी क्लियर है ना? आप चेक Yes, sir. कर रहे हो ना कि आपके डेटा को चेक, दिस डेटा इज व्हाट, तो इफ इट इज करेक्ट देन रिटर्न समथिंग, अदरवाइज अगर वो डेटा मेरा सही नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, उस पर उसके फंक्शन के प्रोग्राम को फिर मैं चेंज करूंगा, फिर एज एक्सपेक्टेड बनाऊंगा। अगर वो रिजल्ट हमारा अनएक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है तो फिर मैं अपने फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, फिर चेंज करूंगा, फिर console.log लगा के चेक करूंगा कि इज इट रिटर्न्स correct or correct data or not. If it returns something correct, then we will just return something from that function. So उसका काम complete, वो जाके फिर बैठ जाएगा। फिर when you call, फिर वो उठेगा, फिर वो अपना काम करेगा, फिर वो आपको return दे देगा। Okay, is it clear? So return is a very important keyword which every function have. अब हर function के पास अपना कुछ, वो कुछ ना कुछ return कर रहा होता है। ठीक है? Clear? So that's it. Okay, so we will continue tomorrow on arrays, and we will just make arrays as a बहुत कंफर्टेबली array को भी कंप्लीट करेंगे। तो फंक्शंस इतना ही था। अब आप अपने लिए कुछ अपने अंदर कुछ डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करके चेक करना। इससे क्या होगा कि आप जब फंक्शंस क्रिएट करोगे उसको कुछ कुछ आप अपने हिसाब से डेटा को इमेजिन करके वो डेटा प्रोवाइड करना, और वो देखना कि वो फंक्शन एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Then after, when we will talk about data structures like array and objects, then we will just move, हम ऐसे फंक्शंस बनाएंगे जहां पे हम एरेज और ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलेंगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। यस विपिन। तक आपने जो CSS और HTML आपने जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं वो भी कंप्लीट हो गए या अभी आगे से आगे और पढ़ा हो गया? देखो HTML CSS तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट when we are building a project on React, देन वहां पे हम एक CSS की लाइब्रेरी सीखेंगे विच इज अ वेरी मोस्ट पावरफुल UI लाइब्रेरी, क्योंकि करेंटली आजकल इन बहुत सारे मैक्सिमम लाइव प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं, विच इज मटेरियल UI और सिंपली कॉल्ड MUI। लेटेस्ट वर्जन उसका MUI है, तो वो हम सीखेंगे जब हम React पढ़ेंगे। तो वहां पे आपके नॉर्मल HTML एंड CSS फिर कवर होंगे विद द हेल्प ऑफ MUI। ओके सर। सर, ये जावास्क्रिप्ट वाली नोटपैड आप खोलते हैं या आपने अभी बनाई हुई है, ये शेयर कर देंगे आज? यस, आई विल शेयर दिस। या ये ना, कौन सा ये वाला बोल रहा हूँ, आई थिंक नहीं ये वाला। या आई विल जस्ट शेयर वेयर इट इज। सर, जिसमें से आज आपने पढ़ाया वही वाली? हाँ सर, ये वाला। यस, ओके, आई विल शेयर। या ठीक है, सो बाय, गुड बाय, हैप्पी वीकेंड जिनके लिए संडे है। Thank you so much, sir. गुड नाइट सर, आपके लिए भी तो संडे ही है। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। सर ये जो और एक जो सर जो क्वेश्चन आपने किया था वो तो किया नहीं सर, वो जो क्वेश्चन। सॉरी, ओके, तो कल मैं आऊंगा तो ये फर्स्ट पहले ये फंक्शंस का एक कंडीशन चला के दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी आप लोग भी चेक कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर 2 इनपुट लेना है और फिर कंपैरिजन कराना है जस्ट विद द हेल्प ऑफ क्या, तो आपको कंपैरिजन के जो इफ एल्स इफ है वो उसके अंदर फंक्शंस के अंदर डालना है, और उसके अंदर आपको ऑपरेटर्स चलाने हैं, जैसे कौन से एंड के ऑपरेटर्स हो गए, और के ऑपरेटर्स हो गए। फिर आप जो वैल्यू पास करोगे एज एन आर्गुमेंट इन दी फंक्शन, चेक करना है कि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है ऑन दी कंसोल। समझ रहे हो? यस सर, Yes, sir. यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। Yes, ये Vicky. जो JS में है ना, इफ एल्स और एल्स इफ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स सिर्फ 2 ही है क्या? देखो, एल्स इफ के अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस हैंडल कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि इफ यू वांट फॉर 5 यूजर्स कि अगर आदर्श नेम आए तो समथिंग ये प्रिंट करे, अगर निखिल नेम आए तो ये प्रिंट करे। तो दीज ऑल द कंडीशंस आर हैंडल्ड विद एल्स इफ। यू कैन इंसर्ट एज मेनी एल्स इफ इन बिटवीन एल्स एंड इफ एंड एल्स। एक इफ और एल्स के बीच में यू कैन इंसर्ट एज मच एल्स इफ एज पर योर रिक्वायरमेंट। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी एल्स इफ आप लगा सकते हो एक इफ और एल्स के बीच में। सर, एक क्वेश्चन था। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो कि इफ अगर ये हो तो ये करो, 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 ऐसे 4 कंडीशंस आ गए, तो आप क्या करोगे?
पहला इफ बनाओगे, अगर ये है तो हमें ये करना है, अगर ये है तो एल्स इफ में चला जाएगा, फिर थर्ड टाइम एल्स इफ में चला जाएगा, फिर फोर्थ टाइम एल्स इफ की कंडीशन में चला जाएगा, और पांचवी बार वो किस में चला जाएगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा। नहीं सर, एक्चुअली वो मुझे ये पूछना था, मतलब कि जैसे कि पीएचपी में और भी है लूप्स, डू वाइल है और भी है ना। they are the loops method which are used with arrays. ओके, तो वो इसमें भी है, सेम ही है ना। या वी हैव अ डिफरेंट, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं लूपिंग के लिए, फॉर इन है, फॉर ऑफ है, मैप है, देयर आर सो मेनी। फॉर ईच। या we can use in when we worked with arrays and looping over arrays, then we will use these methods. Okay. Yeah, okay, so ठीक है, goodbye guys. Okay, good night sir. Thank you sir. Good night sir. Yeah, Good night sir. Thank you so much. good night. Thank you sir. Thank you sir. Hello sir. Yeah. सर प्रकाश बोल रहा Yes, प्रकाश. हूँ सर मेरे पिछले 2 क्लास मिस हुए थे, सो उसका रिकॉर्डिंग वगैरह आप प्लीज मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन में बात करो, वो प्रोवाइड करेंगे। सर वो क्या ग्रुप को ऐड नहीं किया बोले आप थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा बात कर लो, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स बताना कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम और यू वांट सम एक्सेस, दे विल प्रोवाइड। हेलो सर। या सर ये जो आप बता रहे थे, ये टीचर से पूछ लेना जो भी प्रॉब्लम आती है ये करने में, या तो ये कहाँ पे जाके करना पड़ेगा सर? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर होगा आपके पास, अगर आपके पास नहीं होगा तो किसी ग्रुप में किसी से आप ले सकते हो। अच्छा, दे विल प्रोवाइड यू, यू हैव टू कॉल इन ऑफिस आवर्स। और उनसे ये आप ट्विटर पे कह रहे थे आप, ट्विटर पे कहाँ? नहीं, ट्विटर पे नहीं जाना है, कॉन्टेक्ट नंबर पे अच्छा, ये मेंटर्स के पास फोन मिलाना है क्या? यस 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 यस। ठीक है सर। ओके, ठीक है गाइस, चलो बाय।